Very fun. Hello. Good morning. Good morning to all participants. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. At present, very less number of participants will be connected. So I think we will wait for 5 minutes. After 5 minutes, we will start our first session dated 11 March. Hello. Hello, am I audible? Yes, yes, yes. You are audible. Okay, okay. Yes, sir. Yeah. So, please let me know when shall I start. Sorry Yes, for the delay. sir. Please wait for 5 minutes. Okay, We'll start first from your introduction. okay, okay. Dear participants, very warm good morning. As we all know, this is the third day of faculty development program. So first, the today first session will be given by Dr. Chandan Kumar Sharma. So firstly, welcome Dr. Kumar Sharma and thank you for the acceptance our invitation for giving a lecture in our FDP program.
So, firstly, I give you a brief introduction about Dr. Chandan Kumar Sharma. Dr. Chandan Kumar Sharma is an assistant professor in the Department of Metallurgy and Material Engineering in the IIT Patna since 2013. He served as an assistant professor at Punjab Engineering College, Dimd University, Chandigarh, and worked as an RA at the University of Louisiana, Slovenia. Dr. Sharma also have a valuable industrial experience in renowned ceramic company just like Saint Gobain and Greville Norton. So Dr. Sharma research focus on tribology, advanced ceramic, wear resistant material, and high performance composite for aerospace and energy application. He is currently leading and collaborating on several major research projects funded by agencies such as DST, DBT, SERB, ISRO, and Ministry of Mines. Apart from this, he also collaborated with the different international collaborations such as Indo-French, Indian-Slovenia bilateral scheme with the cumulative funding of several crore of rupees. He also have a many consultancy project with the collaboration of industry. His project include work of cryogenic tribology for aircraft engine, self-lubricating ceramic material for spacecraft, and high-strength aluminum hybrid composite. He has published more than 30 research papers in reputed journals such as Ceramic Industrial Wear Friction and the Journal of European Ceramic Society. He also have an Indian patent and has authored a book on tribology performance of solid lubricant. So Dr. Sandan Sharma has delivered invited talk at several international conferences and actively contributed to academic, administration, and professional society. So thank you, Dr. Sharma. I think your contribution in our FDP program entitled Research Culture Development in Higher Education and Institutes are fruitful for our. So we welcome to Dr. Sharma for presentation. Sir, please share your slide. So I'm sharing my slide. Thank you for the introduction. Are you able to see my slides now? Uh, yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Thank you for the introduction, and very much thanks to Dr. Akhilesh Kumar and organizer and convener of the FDP to invite me for this talk. So I'll be delivering my talk on research cultural development in higher education institute. So considering this, my lecture roadmap will be like understanding uh, research culture first, and then global research ecosystem will try to understand, and research cultural in India, and innovation and technology transfer, how to deal with, and then strategic for universities. So first of all, what is research culture is? So you try to realize that institutional environment that promoting inquiry and innovation, collaboration with different faculty members, student, industries, this all included, like, okay, you should have very good infrastructure funding. So this all included to this all considered as good research culture in an in organization. So where it should focus on research creation, innovation, and dissemination of this particular knowledge. So steps to build research culture is, if you see, it is like, okay, first is vision, then policy. Once you are making the policy, you are approaching for funding. Once you got the funding, you are actually mentoring few students and all. And this is how it is going in our Indian society, Indian research culture. And then it is going for evaluation through by you as well as your student. And core component of this research culture is obviously that leadership that is given by you.
and then funding that you are actually trying to get out of some organization, funding agencies, and that could be government agency or it could be your private agency. Then it comes to infrastructure, like that funding you are actually developing infrastructure, that is in research infrastructure. And having all those things, you need to have some particular student, that should be JRF, SRF, UG student, PG student, all together you are starting, and then your research should be impactful for the environment, for the society. So considering all those, these are the core component of research culture in our higher education system. So that research culture actually positively, if you see it, is like, okay, you are actually publishing report, research theme you are developing, and then you are generating journals, and again you are writing current projects. So all together, your student, you used to go to present your talk in conferences, and all together it included as like, okay, you are developing research culture, you are having infrastructure and everything, you are approaching for fundings. This all together is considered as research culture. In that, if you try to understand a positive research culture is actually you have to give proper scientific training, and that should be like scientific training should be well with respect to your mentorship and transmission. So that all included, uh, including all those feeders, actually you can say this will actually lead to positive research culture in an organization. So considering this research impact pyramid, if you try to realize, and research cycle, so again it related to education. First you are developing an idea, that I on this, on the basis of that idea, it lead to projects. You are writing a project, then it lead to publication. After getting your funding, you are working on this particular idea and you are getting publication. And out of this, sometimes you can have innovation or patent filing process, and totally it all together impacts the globally, it impact well. So in that particular process, actually research cycle, if you see the government policies, grant, this is very very important. These are the keys actually to realize that global impact or research culture in the in research organization. So we start from here, and we have to get funding from government as well as industry, and our idea should align with the government policies as well as industry requirement. So this particular core we have to focus on according to our research culture, so that it should be impactful for our uh, it should be impactful globally. Considering this research life cycle, if you see, so you have to, again you have to write an idea, proposal, then funding, then research, then you are moving towards publication. So all together, if you see the research life cycle, it includes like, okay, your idea is there. Out of your idea is your research strategy, you are developing your proposal, then you are leading to research process, and this research process led to some proper results which can lead to publication, and then impact globally very well. So in this line, if you try to realize innovation pipeline, and why is it required, so it is like, okay, you have to get idea. Innovation pipeline is idea, research, then you have to develop prototype where you are actually looking to file the patent. Prototype you need to develop, then you are realizing, no, this work can be patented, so you are going for patent. And then once you are patented, it can go to technology transfer, or you can say product transfer in industry. So these are the key factors which is actually leading to innovation pipeline. So considering this innovation pipeline, if you realize, somehow, just a moment, it should come, I don't know, it should come. So yeah, so innovation pipeline, in that actually if you realize why it is required, so it is required because if you try to realize here that feasibility. So if you are dealing with desirability only, our requirement that growth fit will be low, sir. You are talking about problem, but towards moving towards growth, you need to have a innovation pipeline, means where you can patent the thing, prototype you have to develop, and it should move towards business model, it should move towards industrial requirement, it should move towards societal requirement. So it is very very required. It is not only you need to find out a problem and you work on this is desirability. But feasibility means you have to move towards its growth fit, you have to move towards its industrial fit.
So considering the same, if you move to a technology transfer process, so once you discovered the thing, first you have to go for IP protection, then licensing. After licensing, actually you have to talk with a startup or something, or you own can start your startup, and after developing that startup, it can go for commercialization. So first you are checking your patent or your product while with in contact having a startup, even if it can be a proper industry, but again they will be dealing with your idea, with your patented work at your laboratory scale. Once they are finding it suitable, they will move towards commercialization. So considering this part, actually this is how we are leading to technology transfer process. So typical process, if you try to understand in a university, you are actually going for scientific discovery, that is at university scientist level. Then you are actually going for invention disclosure, that could be university scientist level, and then technology transfer officer, they will be in touch with you. So patent step it will be, and then you are moving towards evaluation and invention of patenting. This is again, you both will be working from university as well as technology transfer officer. Then patent application filing will be doing, that can move towards reject, or that can go to patent issued. And at the same time, this you can move towards marketing of technology to firms, or to you can approach directly to the industry. So again, after filing the patent, again you can negotiate for the license, and what should be the price if you are going for, let's say, technology transfer and all those things. So this is how a typical method that is being observed in universities to have a filing of patent or licensing step. So considering this, if you try to realize growth of global scientific publication, so this is how you can see, like, okay, earlier in 2000 it was close to 5 lakh, and now it is reaching to 25 lakh around, so per year. So this is how moving we are moving towards publication globally. And in the same line, if you see from in India, in Indian research also we are moving with the same process. Now India is growing fantastically in publishing the papers, and this is all because if you see India position almost like it is in 2025, India position global research output around third. So after China, United States, you see this India is coming as third in publication point of view. So this is all related to, and patent application still we are lagging, but yeah, still we are able to go for 10,000, 1 lakh around patent filing every year. So this is all related to how much actually how much amount we are putting it in R&D. So USA and China globally, if you consider like all over globally, are considering all the countries how much fund is given to R&D. So in that 25% and 23% is coming from China and USA. So India, if globally complete, if you collect and globally, India will come around 2.3%. That is, they are this much amount is being given to R&D to explore the possibilities, to explore the innovations, ideas. So in that aspect, if you try to realize, our research ecosystem is dependent on government, universities, society, industry, and then as well as startups as well. So in this, globally, if you try to realize, you see, like, global research ecosystem, if you try to realize, USA, UK, Switzerland, they are highly connected with different people. But India, China, China, though they are very good in research, but they are not connected with all the, like, countries. So USA is dominating. USA, Switzerland, they are UK, they are dominating in research, global research ecosystem. So it is not with respect to publication I'm talking about. It is with respect to connection, global collaboration. So Indian higher education system, if we talk about what is the advantage over here, is we are having 1100 plus universities. We are having 40,000 plus colleges, and one of the largest education system in the world we are having, which can lead to our research ecosystem drastically and the same we can see, like, okay, compared to 2014, if you see India, like,
higher education system in QS ranking system in 2000, by 2014 our 11 institutes were there in QS ranking. Now 54 institutes are there in QS ranking. So slowly India is growing towards our research culture, and they are actually working well. Our policies are working well, but again research are concentrated in elite institutes, like okay, it is very limited to some considerable institutes only. So it should grow in policies. Always already government is floating several policies where we can work, and we can actually lead to uh, increase our what we can say, like okay, our research culture. So in that aspect, like if you look at the strength of Indian research, this is large talent pool, strong engineering education. So talent pool, we are having almost 37.4 million higher education students are there, and this STM expertise are there. STM expertise, that will lead to higher high end instruments run, expertise. How they are skilled person actually. They can run this high end instruments actually. So in that growing startup ecosystem we have, and then we are having emerging global research collaboration as well. So considering all those things, I'll be giving some uh, examples as well. So challenges in Indian research is, uh, though it was what we saw, like okay, almost 2.3% globally. If you consider all the fund, 2.3% India is giving almost 2.3% of global economy, GDP, globally collected fund for research. But with respect to GDP, it is low. Our GDP, it is only 0.7%. However, China and USA, they are giving around 25%. So this is where we are somewhat lagging, and limited industry collaborations we have. So most important part in our research ecosystem is where we have to really work hard actually, that is related to industry academia gap. So we in our research culture, this is where nowadays, if you look at for any funding agencies or any funding opportunities government is giving, you have to involve industry. 10% funding should be coming from industry. It means you have to work on an idea that is actually required to industry. So this is where we are lagging, and this is where our policy is focusing now. So heavy teaching workload, this is already there. So like as I told, like okay, this depends on like institute to institute, where faculty student faculty ratios are lower, or that is already being defined, like okay, it should be more than 25. But yeah, this also comes in a role, like oh, this is also a challenge in India to perform any research. And then infrastructure limitations, we all know, like okay, many a time we see, like okay, if we have to perform some high end experiments, people are preferring like to send their sample to abroad, or they are performing when they were going to there, they are saying they are having better research infrastructure. It is all related to, we have to develop slowly. So but at the same time, I'll let you see that our institutes are also growing drastically now. So they are ranking, they are coming under 100 in QS ranking. So need of our age, we have to bridge the gap in between the academia and industry, where like okay, you have inventor, you are inventing, publishing, but you need fund and revenues. That is actually needed. So considering all those things, we need to a need of the hour is like okay, we have to bridge the gap between industry and academia to improve our research culture. So what is the role of universities in that research? So role of university is generate new knowledge. You have to keep on focusing, keep on reading. One has to keep on discussing with the industry partners, and you generate new knowledge so that that same can be transferred to your researchers. Train researchers and innovators, because many a time students are coming with very innovative ideas. So this is where our research university can work. So generate new knowledge, train researcher and innovators, support technological development, and then contribute to economic growth. Further, building research infrastructure, central infrastructure facilities are required, central instrumentation facilities are required. Like Indian government already has started in NEP that ISTM.
ISTEM is like uh, other institute, whoever, like all the institutes are having big facilities, costing around 50 lakh crore and all those things. They have to put this in ISTM website, and anybody can book the slots and they can perform the test. This is where our policy is improving nowadays. Advanced laboratory we have to develop, research data infrastructure we have to develop, high performing computing we need to develop, so that we can run uh, heavy simulation modeling processes and all those things, where our performance can be tested on the modeling based. Then encouraging student research. It is like earlier days, like, okay, mostly people are focused with the master student or PhD student with respect to their researcher. But very recently, it has started in different universities culture. It has incorporated that, and undergraduates are also being sent to internship. Undergraduates are also being sent to summer internship, winter internship, or let's say complete 6 month they are being sent in their curriculum. It is included well, like, okay, you have to 6 months you have to spend in some industry, you have to spend in some organization, higher organization, research organization, where you can work something. On that basis only they are getting evaluated. So undergraduates research programs have been developed, and that should be like bridgestone, uh, lap capstone type of, we can say, like, it has been started some program where they can, that is a course actually being developed. And in that course they are asking, like, okay, you have to come with the idea, you can develop your model itself. So undergraduates are, when they are coming with fresh idea, new knowledge, they are sometimes coming with very good project. So it is not always we have to, because if you move towards master, we all know, if you move towards master program or PhD program, we have to be very specific. But undergraduate, it is not. They can actually explore themselves, so they can come with any idea. So bridgestone, that our program, our actually course has been developed for the undergraduates, where they can come with the ideas. Innovation labs should be there. We should be having a space to put the instrument and let them work together. Then hackathons and competition, like, okay, earlier it used to be like toys used to be very costly. Nowadays, if you see that, we all know about this decathlon and other. So they all are coming out of this particular process, that Indian policies that we need to make in India, and then at the same time this should be presented to all. Then different ideas they are getting about their toys, their product, their models, and then again they are rectifying it. So this help in reducing the cost of different products in the market. So this is how we all know that decathlon, they are providing us very good product in lesser price. So, and then research internship, as I told, like, okay, it is not only limited to postgraduate and PhD only. Now it has explored to undergraduates as well. So this is where our university can work. Then promoting collaboration. University should make a memorandum with other universities or other industries. So MOU should be done. International research partnership should be done. Industry sponsor projects should be retained and done by the universities. Joint laboratory can be made. Like, okay, industry can say, like, okay, we are developing our lab, because few high end industries who are actually working with, let's say, high end instruments, so they can actually put that their instrument as a demo in your universities. And then people will start working there, they will get advertised, they will get explore, like, they will be having, like, okay, people will start understanding the process, and then the procurement will increase. So industry sponsor projects should be there, joint laboratories should be there, interdisciplinary research is very required. Because as we can say, like, okay, if you interdisciplinary research, if you try to understand centers, like, okay, if you need to go for biomaterials, so it is not only the material part is there. Here we are having biocompatibility also we have to check. And at the same time, so it is related to interdisciplinary research. It is not related to material only, because ceramic are being used as a hip implant, knee implant material. Polymers are being used as a hip implant, knee implant material. So those should be having our biocompatibility. Like, okay, it should not react with when it is going our
when going inside our body. So this all understanding can be developed when we are one can start on understanding, realizing the research with respect to other disciplines as well. We should not limit ourselves to be to impacted with our particular core area. This is how, if you see, even in like if you go for higher educations, research culture, in that part, if you realize, many centers are being developed in different IIT, different universities. In that center, they are not asking for core people, like okay, they should be coming from physics, chemistry, or engineering in mechanical only, or materials only, or electrical only. They are open enough. In engineering, nowadays you can see in engineering, science people are there. So it is all interdisciplinary. Then only our research can focus, can move higher towards. So this is where already government has started working, and you can see different faculties in different universities with having the interdisciplinary research. So future trend in research is, as we can realize nowadays, artificial intelligence. So that comes once you are having like data over open access data should be there, so that you can have number of data you can collect, and then on the basis of this data you can actually artificial intelligence, you can say like okay, yeah, if you are going to this path, this will take this much time, because number of people has visited to that path, and then they are saying okay, this much time usually it takes. So this is artificial intelligence. Sustainable technologies are required to uh, to save the environment. Then advanced materials are required, and then quantum technology. So these are the research trends nowadays. Future research trends are moving towards these particular areas. And role of government policies, if you see, so government has started NEP 2020 National Education Policy, where they have incorporated IQAS. We all know Indian Knowledge System. So in government is actually started emphasizing to explore the possibility that we used to say since long, that our education system was very strong. And so slowly, once you are getting funding for this also, so that people can explore what uh, Indian education policy is giving. So this is how, like okay, IKS knowledge, Indian knowledge system, that course is there, from where we can actually say like okay, this is what our ancestors used to do. And then in NEP, very good process they have incorporated, like okay, in sometimes many people suffer, let's say they are not able to complete their course with, because of any reason, their family issue, their financial issues. So any issue can come, so they are most of the time they are completing 1 year 2 year, in between they have to drop. Now NEP they have incorporated, you can go and again you can join from the part where you have end up. So these are the good quality, these are the good points has been added up, as I told, like Bridgestone course has been added up, internship has been added up. And then uh, in one go you can complete your BTech and master that to MBA. So this has started recently. So this all comes under NEP policies. And then National Research Foundation, you can say, where like okay, they are having 11 role in government education, like okay, funding, infrastructure development, teacher recruitment process, regulation and quality assurance. So those all are these are coming under our National Research Foundation. And then Startup India program has been started, that gives like okay, almost I can say like 1.6 lakh, you see 1.6 lakh startup has been recognized as of January 15, 2025. So these are new startup that comes under this Startup India government policy. Then Prime Minister Research Fellowship has been given to different student, where a researcher who are like most of the time researcher thinks this is very less amount we are getting, though it is better fellowship nowadays. Now people are getting fellowship, better fellowship, but PMRF it started it gives around 75,000 per month or 1 lakh per month. And at the same time, recently government has started Prime Minister faculty program as well, where like our retired professor, our industry expert, they can also incorporate and they can again start with. So this is how government is
giving our role, and they are generating policy. So importance of research funding is like institutional budget we are having, government funding we are getting, industrial sponsorship funding we can get from our institute itself, like to start your facilities, okay, this much fund you get and you start your lab. So that on the basis of this start, you are getting some result, and that the same result you can show to your in your proposal you can write, and you can propose to government project or industrial project, and then you are getting your funding. This funding you are utilizing in research and development. This comes under research and development funds, and this actually gives us professional and skill development, faculty professional development, industry based lab we can develop, incubation activity like uh, TIH and all can be developed. Faculty can get project, student project can be done. So this all requires funding. Without funding we cannot start with our this. So this culture, with respect to our research culture, it is very very well established with the government. Where we are lagging, that I told, like, okay, we have to coordinate with industry sponsorship. And then further, if you try to explore the different source of research funding, government grant, corporate sponsorship, where actually I'll let you see that even from corporate, from industry, you can get their CSR fund, that is corporate social responsibility fund. So through this also you can have your equipment, and then different collaborative research program you can have, and they can, on that basis you can actually explore for the fundings. So these are different funding agency, that is government agency I'm focusing here. We are like, okay, DRDO, ARDB, DBT, BRNS, BARC, ISRO, ANRF, NRB. So different Ministry of Mines, Ministry of Railways. So different government agencies are there, where we can actually write our proposal with respect to our research areas, and we can have funding to explore our ideas. So key takeaways is research culture requires leadership and funding. University must integrate teaching and research. Collaboration accelerates the innovation, and India has major potential for research growth. So in that aspect, I have included a few case studies regarding IT Madras Research Park. So IT Madras has developed research park. On that basis, like they are leading universities in innovation hub. Strong industry, they are rank one university, rank one engineering college in India. Strong industry academia collaboration they have. Just this is not their campus. This is not their academic campus. This is research park. Here company can come, and they are supporting to startups. They support to startup, and from these startups you can see, like, okay, almost 200 deep tech companies has come. We all know about Ether Energy, electric vehicle we all drive nowadays. So this is what they already have provided, this research culture, this research park to different, and this is to their students. So you see, like, okay, they are all involved, and they are rank one university, one rank one engineering college in India, and they are also having very good QS ranking. And another case study, if you consider, that is ISC Bangalore, we all know. So this is rank one university, and overall it holds second spot in overall category, because first spot is there in with IT Madras. So this what is the importance here is, you see, they are having high research output citation impact. In QS word in ranking consideration, they are having perfect score of 99.9 out of 100 in citation per faculty matrix. I mean, every faculty is working in such a area that is being cited highly. Their work is not simply that they are not of use. It is not like simple publication they are developing. They are developing a publication which is getting cited highly, and then they are having very advanced laboratories which can work in required area, like National Nanofabrication Center. They have biosafety level 3 contaminant facilities they have, where they are actually I came to know, they are actually half skull person. They born with half skull, uh, forehead, and they develop this complete full skull by developing, incorporating this biomaterial. So this is how they are working. Their research facility is superb. Supercomputer they have.
their computer education and research center they have developed, and a strong global collaboration also they have. University of Melbourne, they are giving they are the first type of institution which giving joint PhD program. So joint PhD degree they are giving, and then other different Max Planck universities, Rice University. So they are having very strong collaboration. So what I want to convey that, like, okay, you need to develop very strong infrastructure, like our research culture is focused towards developing a strong infrastructure, at the same time strong research collaboration fundings. And then if you say, like, okay, you have to collaborate with industry, like IT Madras has done. They are developing research park where other industry, it is not that research park is not associated with their student only. The big industry can open their small R&D over there, so that their students are getting placed well, and they are getting exposure what industry is actually needing of. So this is how they are working. Then case study, like, if we all know MIT rank one university, so MIT media, they are having interdisciplinary research culture. I know one professor there. She works. She's actually from India, Devlina Sarkar. She has done his graduation in electronics. Why I'm talking about this interdisciplinary research culture? She has done from IIT ISM Dhanbad. She has done her graduation in electronics. Now she is working in materials, that too biomaterials, and she is making uh, nano robots which can go inside our head and they can cure the cancer. So this is all about, because she was having expertise in electronics as well, so she can develop that robot. At the same time, she is getting in knowledge about the materials as well, and she is working with biomaterials, so it should go to our nerve system, to our veins, and in our forehead or head, and it can work. So this all interdisciplinary research culture they are developing. This is how she is working very well, Dr. Devlina Sarkar. And then collaboration between engineering, design, and science. They are having strong industry partnership. They are having focus. They focus very much on breakthrough innovation. Whoever comes with some breakthrough idea, they are not hesitating in providing the fundings. So this is how this research culture develop in higher education system, where they are investing highly, they are providing fund highly in their ideas and their infrastructure, research collaboration. So this is how one should work. So if you look towards Stanford University, another reputed university, rank 2 university, they are having always MIT, Stanford, Oxford. They are having one, two, three. They are sharing with themselves. So this is all about strong link with Silicon Valley. They are having entrepreneur culture. They are having large startup ecosystem. So they are not matching with the same thing. They are developing, they are focusing on a particular theme, and they are in that particular area they are working. Successful technology transfer model they are having. So this is how research culture they have developed in their organization. ETH Zurich, this is one of the finest university in European countries. So this is leading European countries. This sometimes it is being considered then better than MIT and all. So this depends, like people's choice. But ETH Zurich is one of the finest European research university, and it is having high research funding, huge funding they have. Even if you go for your doctoral research or postdoctoral research or master research, the amount they are giving, no other universities are giving. So the salary or fellowship of a graduate, undergraduate, master student, PhD students, postdoc students, they all are getting that huge amount. So they work very satisfactory. At the same time, strong collaboration they are having with industry. They focus on science and engineering innovation again. So innovation, and to get the ideas towards innovation and to product, it requires fundings. So apart from all this, we one should also focus on research ethics. It is also required, like we should interact with research ethics. Our research, it should not be like, okay, we should not uh, what we can say, copy the data, or we should not simply hide the exact result. Because in the area you are working, the same area other one can also work in word. So if you are projecting right result, on considering that, reading that result, one will not move or move towards that particular theme.
So we should properly, like, we should not, like, okay, like in research publication, if it goes to review, so sometimes it goes to your known, so they are asking, okay, what do you want, so you are asking, please accept. So this is not the way. Research ethics we should follow: ensure the validity, reliability, maintain the research integrity. We should not, we should say whatever we are feeling, that comment you give, because it will improve our research. Navigating ethical dilemmas, uh, and promoting social responsibility, because as I told you, okay, whatever result you are going to present, you are going to publish, the same people are going to follow in their life. So you are responsible. You have to understand, it is not only the publishing of paper, you are having some social responsibility as well. So in that aspect, proper result, even if you are targeting your material, or let's say your research, considering this result you will be getting, you are not getting, that is also publishable, and you should report, so that people will understand, if you are going to follow this particular path, we will not be able to end up with our result what we are looking for. So this is how we should promote our social responsibility. We should stick with research ethics. And it is generally in our culture, research culture, in higher education system, it is being measured on the basis of publications. Good impact publication, then citation, because publication can be without without impact factors and all those things. And impact factor also is not very good sign, as you can say, like, okay, if you go for open access journals, they are having very high impact factor. So publication comes with citations, the work you have done, how many people are referring that work. Again, in citation, self citation should not be there. And then on this basis, you have been indexed with h index value. Then the number of patents you are filing, then how, what is the social impact you are getting out of your patent. So these all are being measuring tool, you can say. These are research metrics for your research in higher education system. So these are the measuring tools actually. So open science is required in India at the moment, and it is already being, recently government has done very good policy. So most of the publication, it is easily available. Open access means whatever publications are there, that can be accessed from anywhere. Earlier it used to cost, it used to ask for enrollment, some funding or something like that, extra money, all those things are required, and that amounts are used. So most of the literatures are not open access. So global best practices, and we must implicate this in Indian higher education system, that open access of data, open access of literature, public participation and partnership, so that out looking to your considerable research, public and partnership, empowering infrastructure. So this all comes under open science. This is what is required for a very healthy research culture in our higher education system. And what is the faculty role here is to build the research group. Supervisor, faculty role, being considered as supervisor, they should build the research group, mentor PhD student, support them. Supervisors should have expertise, they should be enthusiastic. It should not be like students are coming with results or something. Many a time they are occupied with heavy work, so they are not focusing. So they should be enthusiastic. Good communication they should be having. They should be having very active, so they should obtain grants, publish research, build research groups, collaborate with the peoples, mentor PhD students. And overall, if you see, so research group structure is: professor is there, then assistant associate professors are there, then postdoctoral research are there, under them doctoral researchers there. Now recently it has started UG researcher and PG researchers as well. Uh, for example, I mentioned here, you see, this professor Mitch and Kalin, they are mentioning their researcher, academic colleague, as well as technical staff and alumni in their complete website. So they are having very good structure with respect to their research group. This is how they are leading to good research culture towards global impact. So I took one like quick example for my research, like as a case study part, where like
just to let you understand up to what extent people have moved towards research and what are the different possibility. I'll simply let you realize that even I have explored the possibilities. So that's what I wanted to convey here. Like my research area, first I should let you know, like, okay, I'm dealing with material part. So that is structural ceramic, where i'm I'm working with their structure, microstructure, through processing, how we are developing with respect to developing process, different process microstructure get altered, and this is how mechanical and wear properties can get altered. So my main theme is processing of ceramics and tribology of materials. So what I work is like processing of ceramic I can do with hot pressing, flash sparking. So I'm not going to going in depth for this process. I'm simply letting you know, like, okay, to develop the ceramics I'm going with three different processes, and after processing I have developed different structural ceramic and cermets where I have performed the tribology. Tribology is in layman language, if you understand, this is friction and wear between two moving relative body. Like, okay, that because of friction only we are able to walk. Otherwise, if friction is not there, we'll slip and will fall down. Because of friction only, our when we are applying brake, our vehicle is getting stopped. Otherwise, if friction is not there, brake fail means friction is not working well, and then our tire is getting impacted with the road because of friction. So this is the area, mostly this is the area where I'm working. So in that process I just want to convey this reciprocated sliding. This part I have done through India Slovenia research collaboration project. So this is again University of Ljubljana. I visited and I worked during my research tenure, and this we got through industrial funding, so government funding that is related to India Slovenia funding. So India Slovenia bilateral project we have worked on. This is where I was able to perform this. And then again, if you try to realize my research theme, so it is again this complete process, this hot pressing I have done. I got the international travel grant again through SERB, one of the government agency, where I visited South Korea, University of Seoul, and I performed hot pressing of my sample. I prepared this sample, and this flash spark sintering I'm doing with University of London research collaboration. So we one research culture means we have to explore for the funding, we have to explore for the collaboration, and again you see like this again this equipment, test I have performed using government funding, that is again we collected from ISRO. So this is how we are working. So here I selected one topic just to have a proper like information, like up to what depth one can work. So I'm going to realize that if we are reinforcing tungsten carbide in silicon carbide, whether its tribological performance will improve. So uh, during what happened, like, okay, if you are preparing sintering, their different compositions, they are the factors which is affecting. I opted for additive composition, which alter the microstructure mechanical property, which is again it is going to affect the tribological property like friction, wear and all. So in that aspect I started with this is the test where this is counter body, this is our material, which is this will apply the force and this will rotate with the load. So here this is the worn surface, or we can say which is getting wear out. So this the track you are getting. This track we are realizing with respect to friction and with respect to wear. So what we realize here after like we are getting friction, we are getting wear, and then after realizing whatever the particles we are collecting from out of which is coming out of this is again being realized by Raman analysis. So what are different compounds are forming in between the relative motion which were not there because of this rubbing process. That high temperature is getting oxygen is there in the environment, this is forming oxides. So this is how in-depth analysis we are doing. Then surface also we are realizing. So this is how we can realize how what is the friction, what is the wear, and then again how it is performing. And it is not limited to that. This is whatever we are getting out of this. But people has moved towards even beneath the surface. So this is where we have not performed the wear. This is where we have performed the wear. So we can see this tungsten carbide particle I told. If we are
putting in silicon carbide matrix, what will happen? So you see this crack is coming and this is getting bridged. So this crack is coming because of this particle, it is getting bridged and it is not coming up to the surface. So this is how it is reducing. So this is without tungsten carbide, this is with tungsten carbide. We can realize that this is deformed well more, this got deformed less. So this is how it is restricting the fracture of wear of material, removal of material. So this is how people have moved towards depth. And with respect to international collaboration, I'm not talking here about national collaboration. There are many national collaborators. I have international collaborator, Professor Michin Kaling, Dr. Jan Hostasa, Professor Young Woo Kim, University of Seoul. He is in Italy, he is in Slovenia, Dr. Sori in Germany, Professor Salvatore Grasso in University of London. So this is how one has to develop collaboration, and one has to develop their research lab infrastructure by using the funding with respect to like these are the research lab I have developed while collecting different funding. And one can see here this hardness tester I received from Mititoyo using their CSR fund. This is free of cost. That's where I wanted to emphasize here is one can explore the possibility with industry partner. If you are coordinating with industry are the way government is asking us to, while writing any proposal, you have to collaborate with industry. At the same time, industry are being told to you have to collaborate with in the academia people as well. So our university can explore these possibilities, and through CSR fund, social corporate social responsibility fund from Mitito, I got this 30 lakh, almost 25 to 30 lakh equipments free of cost in my lab. So this is how we can have all those equipment. So this is how I developed in my laboratory. So I just wanted to convey these are different funding. So you see, I got funding from this ANRF, ARG, then CRG, that is SERB, ISRO, Indo-France. This project is with respect to collaboration, bilateral program, collaborative program, Indo-French program, Indo-Slovenia program, through which I visited there and I have performed my reciprocating test. Ministry of Mines I got. So this is all about, and you can see we are having collaborator every year. We are having collaborator from different organization. So this is where we can work, we can focus. So all together, I want to say our research culture, uh, uh, like for healthy research culture in our higher education system or even in any universities, it is, as I told you, okay, it is not only to limited to IITs or ISC only, it is for all. Government has given very different scheme. I know one is PARS or different schemes are there which is limited to universities. It is not for IITs, it is not for higher grade institutes. So it simple, it is very crystal clear, because from government policies, idea innovation can come from anywhere. So one should not limit to themselves. You plan your research goal as idea, you start with ideas, basic understanding, lead to scientific understanding of results and outcome you are getting, then establish a strong interface between industry and international collaboration for technology transfer, establish a strong collaboration with scientists in your research area, researcher in your research areas, to let them aware that you are working in the same area, and to place your institute or organization in national international scenario. So one should plan their research goal as you start with the idea, but you have to lead your organization, your institution at international national scenario. So that's all from my side. Thank you. Now this is open for discussion and question, how our universities can strengthen research culture and what policy can accelerate our innovation. Mhm. Thank you, Dr. Sharma, for elaborative, informative lecture that clearly show that how can we get research from any research funding from any agency and other institute. So now the session is open for question. If anyone asks question from the online session or offline session, please convey your uh, question.
Yeah, yeah, it is open for all. Please ask. We can discuss. It is not like question out of the PPT only. We can discuss what other research culture, like our research cultures, can strengthen by what other policies of university. If you are having any idea, what other accelerator innovation we can have, policies should be coming like that. So that also can be discussed over here. I think Okay. there is no Okay. question. I think you, Dr. Sandan, you will very give a lecture very elaborative, and there is no doubt for this. And Uh, Hope so. so, uh, I I would like to request for vote of thanks Dr. Shayukta Mayuri from Department of Chemistry, um, MD College. Please, Dr. Shayukta Mayuri, Yes, yes, ma'am. please. So, welcome to you platform for vote of thanks for this session. Thank you, ma'am. Good morning, sir. Good It's morning. my privilege to deliver vote of thanks on behalf of all the participants and organizing committee. I would like to express our sincere gratitude to our respected Dr. Sandan Kumar Sharma, sir, for their insightful and informative session about research culture in India. He has also given the idea about proposal and why research innovation is required in India. He tells about challenges in India research, an important part of research ecosystem. Yes. Your valuable knowledge, guidance, and dedication have greatly enriched our understanding of the topic. We truly appreciate the time and effort you have taken to share your expertise with us. I would like to thank our respected principal, sir, Dr. Shweta Rai, ma'am, IQAC coordinator, and Dr. Shweta Bala, ma'am, NAC coordinator, for their continuous support and encouragement. My heartful thanks goes to all the participants who actively attended the session and made this program successful. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Sharma. Now we will close this session, Okay. and Yeah. so Thank you. thank you so much. Yeah. Dear participants, now session will be start from 12:15. So please join the next session prior to 2:15, approximate 12 o'clock. Thank you. Thank you so much.
नहीं मिला अरे वो याद ही नहीं था ना। अब आपको
a very good afternoon to our respected principal sir, our chief resource person, and our senior sir, and my dear colleagues and dear participants and students. Now we are starting the session second, that is delivered by Professor Devendra Prasad Singh. So, first of all, we would like to invite Professor DP Singh sir and our principal Professor Akhilesh Singh sir and our senior Professor Dr. Hemant Kumar sir to the podium for initiate our session second. Please come, welcome sir to the podium. Now we would like to invite our organizing committee member Dr. Shweta Wala ma'am and Dr. Shankadar Manisha ma'am to come to the podium and please come ma'am. Firstly, as our gratitude, we would like to facilitate our Chief Resource Person, Professor David Prasad Singh Sir, by our principal with the shawl and memento. Thank you, sir. It is our privilege to come in Professor Devendra Prasad sir to here to give a lecture for the session second. Firstly, prior to our session starting, we would like to give a short or brief introduction of our resource person, Professor Devendra Prasad Singh sir, that is delivered title Indian Knowledge System and Quality Research. Professor Devendra Prasad Singh is a distinguished geographer, academic, administration, and researcher with more than 4 decades of experience in teaching, research, and academic leadership. He served as a professor of geography at PPU University Patna and currently holds several prominent academic and research positions. He is a director of research at the Institute of Environmental Research and Nuclear Development, Patna, vice president of the National Association of Geographers and convener of the South Asia Geographer Association. Thoughtful, his career, Professor Singh has played a vital role in strengthening the geographical scholarship in India. He has had numerous leadership positions, including President, General Secretary, and Founder Treasurer of the Association of Geographical Bihar and Jharkhand.
and vice president of NAGI for multiple terms. He also served for 12 years as co-chairman of the National Commission of Geography of Peace. So we have clearly seen that his contribution to our India in the field of geography. Professor Singh has made significant scholarly contribution with more than 15 textbooks, reference to more than 2 references books, monographs, and more than 70 research papers, along with around 80 research articles or abstracts. He has participated in over 100 conferences and organizes numerous academic events, both offline and online. This is much more. He has successfully guided 12 doctoral scholars and completed 3 research projects funded by different organizations. His current academic initiative include lecture series on modern geography in India, publication projects, and atlas on Mahatma Gandhi, and research activities related to agroclimatic, regional, Buddhist sites mapping, and rural transformation through herbal plantation. So we can clearly see, not in the field of geography, in the field of other, just like a regional botany or other philosophical society, they give a very tremendous contribution to us or in our country. So thank you, Dr. Devendra Prasad sir, Dr. Singh sir, to accept our invitation for this to cheers our second sessions. I would like to inform that due to the engagement of Professor Singh after the 2 p.m., so he delivered our second session, that is entitled Indian Knowledge System and Quality Research. So welcome to the sir for your lecture. Welcome, sir. PPT. Sir. PPT, sir. इसमें कैसे चलेगी चलाएगी चल कौन चला नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट चलेगी बढ़ते रहेगा इसको नीचे करते हैं यहाँ से स्क्रॉल करते नेक्स्ट नहीं पीडीएफ है ठीक है ना सर छोटा बहुत बड़ा है तो पूरा नहीं आ ये ब्राउजर तो खुला हुआ है ब्राउजर तो खुला हुआ है मतलब पीडीएफ फाइल में नहीं है ये ब्राउजर होता है ना माइक इसका क्रोम का उस पे इससे डाउनलोड किए तो उसी का सेव है तो उसी का नेक्स्ट देखिए बराबर आ रहा है उस पे बैठा उस पे
हाँ ये बड़ा है। हाँ ये टेक्निकल है। Good afternoon to everyone. Honorable, dynamic and visionary principal of this college, former principal, respected Jha Sahab ji, respected teachers, students. I am feeling much honored while standing before you to have a discussion on the research methodology and Indian knowledge system. Friends, first of all, I have to mention that we teachers are such type of people whose job is not only to teach, engage the classroom teaching, but we should also involve in research. But our research should not be high and dry. It should be people friendly. Nowadays, it is very unlucky, unfortunate that our universities and colleges are working on the pattern of Western style. As a student of geography, I ever feel that geographers of the country, India, followed the research technology and syllabus of foreign countries, especially of Britain. But friend, we should ever remember that their civilization is much inferior than ours, because ours is one of the oldest civilizations of the world. When these Western people, we are roaming in jungles, our civilization was on the high peak of development. When they were hunting, they were engaged in hunting and fishing, our forefathers were planning a planned urban centers. Their scientific temperament was also of high spirit. But due to the thousands of years of our slavery, we have forgotten our intellect. We have forgotten our findings and observations, researches and methodology of our forefathers. And we are forced to follow blindly the research methodology of the Western country. As a student of geography, and also as a social activist, and as a very imaginary mind since childhood days, we have learned in our villages that our people were so wise, so intelligent, and so visionary. जब हम गांव में थे मित्रों, तो आज हम कहते हैं कि ब्रिटेन में, अमेरिका में और ये पश्चिम के जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ के टेक्नोलॉजी हमसे सुपीरियर है। लेकिन यह हमारा भ्रम है, क्योंकि कई सौ वर्षों के गुलामी के तहत हमारे विद्या को, हमारे ज्ञान को दबाया गया, सप्रेस किया गया, और हमें बताया गया कि हमारे पास न कोई विद्या थी, न कोई विज्ञान था।
लेकिन मित्रों, मेरे जो अनुभव है, गांव के जो अनुभव है, तो मैं जब उनको एनालाइज करता हूँ और आज जब उन पर विचार करता हूँ, बात करता हूँ, तो देखता हूँ कि हमारे गांव के लोग एक से एक बढ़ के विद्वान थे। और आज हम पॉपुलेशन पॉलिसी कहाँ से लाते हैं? तो हम वेस्टर्न कंट्री से लाते हैं, हम दो हमारे दो, और हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में भी पॉपुलेशन पॉलिसी थी। हमारे देश में हम लोग अधिकांश लोग गांव के पृष्ठभूमि के हैं, तो हमारे गांव में तमाम प्रकार के जो रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, उनमें जो गीत गाए जाते हैं, उनमें जो रस्में होती हैं, वे अत्यधिक वैज्ञानिक है और हजारों वर्षों के प्रकृति के साथ मनुष्यों की इंटरेक्शन से जो इसेंस, जो ज्ञान अर्जित किए गए हैं, उनमें उनकी फूट मिलती है। शादी के वक्त एक दो गीत हम आपको बताना चाहेंगे और उसके माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में पॉपुलेशन पॉलिसी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शादी के समय, प्राचार्य महोदय आप भी गांव के ही पृष्ठभूमि वाले हैं, तो एक गीत गाई जाती थी जब लड़की विदा होती थी। ए भैया सुनो, जब लड़कियां हमारे यहाँ से विदा होती थी, उसको आशीर्वाद क्या दिया जाता था? दूधो उगो पूतो फलो। तो उस समय लगता था ये कौन सा आशीर्वाद। लेकिन अब जब हम लोग सोचते हैं, एक विशेषज्ञ की नजरों से जब उसकी उसकी समीक्षा करते हैं, तो इससे बड़ा पॉपुलेशन पॉलिसी तो दिखाई नहीं पड़ता। इससे बड़ा पॉपुलेशन पॉलिसी और किस सहजता के साथ और किस सरलता के साथ बहू को दिया जाता था। लड़की जो विदा हो रही थी कि जाओ, जा करके वंश की वृद्धि करो, पूतो फलो, लेकिन एक कंडीशन कि दूधो को, मतलब वंश वृद्धि के पहले, संतान उत्पत्ति के पहले उसके सस्टेनेंस की व्यवस्था करो। दूध दूध इज ए सिंबल ऑफ सस्टेनेंस। तो संतान उत्पत्ति करना है, लेकिन उसके सस्टेनेंस का ध्यान देना है। तो क्या मित्रों, यह पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं है? और उनका पॉपुलेशन पॉलिसी हमसे सुपीरियर है जो हम उनको फॉलो करते हैं, हम दो हमारे दो। और आज जब हम देखते हैं कि मानव संसाधन इतना बड़ा संसाधन है कि मानव संसाधन के बिना किसी दूसरे संसाधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अभी प्राचार्य महोदय से हमारा डिस्कशन हो रहा था कि ईरान के बारे में सोचा ही नहीं गया था कि अमेरिका को घुटने पर खड़ा कर देगा। उन्होंने अब उसके सुप्रीम लीडर को मार करके समझा था क्या पूरे विश्व विजेता बन जाएंगे। लेकिन आज अमेरिका घुटने पर आ गया। क्यों आ गया मित्रों? क्योंकि उसने अपने मानव संसाधन को इतना मजबूत किया और गुप्त रूप से मजबूत किया। तो प्राचार्य महोदय से मेरी बात हो रही थी और मैं अक्सर बात करता हूं कि देखिए, अगर जीवन में सफल होना है, सफलता प्राप्त करना है और ऊंचाइयों पर अगर पहुंचना है, तो गुप्त रूप से तैयारी, पहले तैयारी की। अब आज देखिए, जब पहला दिन मैं मालतीधारी कॉलेज में आया और उसके पहले भी कई वर्षों पहले मैं आया था, और आज जब मैं आता हूं, आज जब मैं आया तो लगा कि ये तो बदली हुई जगह है। क्यों? क्योंकि एक प्राचार्य ने अपने कलीग के इतना प्यार दिया, इतना पारिवारिक सौहार्द होता कि अब लगता है कि सब लोग मिल करके और उड़ान भरने की थी। नाउ द कॉलेज इज जस्ट टू फ्लाई ग्लोबली। तो ये कौन सी क्षमता है? ये क्षमता है मानव के। हम लोग, ये हिंदी के कुछ हमारे साथी होंगे तो एक कविता याद पड़ती है था कि मनुष्य धूल के समान है, लेकिन उस धूल में, उस एक व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वह अपने को अगर विकसित करे तो आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये तो एक पॉपुलेशन पॉलिसी की बात हुई, और एक गीत और याद पड़ती है। ये थोड़ी
ये भारतीय परंपराओं के बारे में थोड़ा आपसे बात करने के बाद हम अपने मुख्य टॉपिक पर आऊंगा। एक शादी के समय एक और गीत थी, वो गीत थी ससुरा, हालांकि मगही में थी, लेकिन ये सारी जो भाषाएं हैं, हमारी बोलियां हैं, ये संस्कृत से निकली है और कहीं ना कहीं उनमें अंतर संबंध है। तो वो गीत थी ससुरा ससुरा, जैसे चिटियन के रे पान, जैसे पुरैनियन के रे पान। मतलब कि बढ़ो, ससरना मतलब बढ़ो बढ़ो बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो, अब बढ़ते बढ़ते छा जाओ। तो हमारे गांव के बगल में एक तालाब था, तो उसमें पुरैन, कमल को पुरैन कहते हैं, तो पुरैन का एक डंठल किसी ने ला करके डाल दिया और पूरा तालाब वो कमल कमल से भर गया। और चिट्टी जब चलती है, एक एक करके चलती, और उसके पीछे काफिला बन जाता है। तो मैसेज ये है, शादी के समय की इस गीत का मैसेज ये है, जो मैंने समझा है कि आपको जाना है, संतानोत्पत्ति करना है, धीरे 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 धीरे, और विशाल बन जाना है। तो यह क्या पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं? तो हम उनके पॉपुलेशन पॉलिसी को मानेंगे, और हर क्षेत्र में हमारे यहाँ पॉलिसी थी। अब गांव के दिनों को, आज के 60-65 साल पहले जब मैं देखता हूँ, तो वहां एक एक आदमी के पास जो ये इथिक्स थे, ये जो नॉलेज थी, ये सारे किसी न किसी क्षेत्र के पॉलिसी थे। अब उसमें एक और कहावत थी, बसे गोद और जोते सोत, मतलब सेटलमेंट पॉलिसी, बस्तियों के निर्माण की पॉलिसी। आज ये अर्बन पॉलिसी और विलेज डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करते हैं और स्लम बनाते जाते हैं। वहां था कि आपको बस्ती बनाना है, कहाँ बनाना है? उस बस्ती में अपने गोत्र वालों के साथ रहना है। गोत्र का मतलब ब्लड रिलेशन के लोगों के साथ रहना है। तो कई लोग कहते हैं ये तो जातिवाद फैलाने की बात हो गई, गोत्रवाद फैलाने की बात हो गई, लेकिन नहीं मित्रों, उसके नकारात्मक पक्ष को नहीं देख, उसके सकारात्मकता को देख। गोत्र मतलब ब्लड रिलेशन। अब जब हम दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो लगता था कि कोई मेरा सगा यहाँ पर होता, मेरा ब्लड रिलेशन का कोई होता। और जब हम दुख दर्द में होते हैं, तो हमारा भाई कोई खड़ा होता है, तो हमारी मदद करता है। तो बस्तियों में बसाने के समय ये हमारे से पॉलिसी थी कि अपने ब्लड रिलेशन के साथ वाले इलाके में रहिए, ताकि हर दुख में, हर विपदा में दूसरे लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपका ब्लड रिलेशन वाला आदमी जितना इमोशनल लेवल पर और बिना स्वार्थ के आपको मदद करेगा, उतना कोई दूसरा नहीं करेगा। तो क्या ये सेटलमेंट पॉलिसी नहीं हमारी है? इससे बेहतर उनका सेटलमेंट अर्बन प्लानिंग है। उनका अर्बन प्लानिंग क्या इससे बेहतर है? और हमारे सिंधु घाटी में जो अर्बन सेटलमेंट खुदाई में मिले हैं, उनसे बेहतर उनके शहर हैं क्या? उसके बाद इसकी दूसरी कड़ी जो थी, जोते सोत, मतलब जुताई, खेती करना, सोत मतलब लोलैंड, जल स्रोत, जल स्रोत की निकटता वाले इलाके में खेती कीजिए, क्योंकि यहाँ वनस्पति शास्त्र के भी विद्वान लोग हैं। तो बिना पानी के क्या वनस्पति और कृषि हो सकती है? तो अगर आपको अच्छा कृषि करना है, तो जल स्रोत के बगल में कीजिए। और तभी तो हमारी जो नदियां, हमारी नदियों के किनारे आप चलिए, हरिद्वार से लेकर के और गंगा सागर तक, उत्तर भारत के जितने भी बड़े नगर हैं, गंगा के किनारे, नदियों के किनारे। तो हमारे यहाँ सेटलमेंट पॉलिसी नहीं था, और उनसे बेहतर था कि नहीं था? उसके बाद ये कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, चकबंदी। तो इस पर हमने अध्ययन किया, कई गांवों में हमने, प्राचार्य महोदय जी झा साहब ने, हम लोग ने अध्ययन किया इस पर कि ये कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग भारत के लिए ठीक है क्या? और हमारे जो बिखरे हुए खेत थे, तो मैंने 5 गांवों को सेलेक्ट किया और देखा, एक बड़ी बस्ती है जहानाबाद में, घोसी, मेरा ननिहाल है, इसलिए उसके बारे में मुझको ज्यादा मालूम है। तो हमारे जो नाना थे, मामू थे, उनका 1 बीघा खेत यहाँ, 1 बीघा खेत 1 किलोमीटर के बाद, आधा बीघा दूसरी जगह। और तो लगता था बिखरा हुआ खेत है, क्यों ऐसा बिखर के रखा? तो उसके पीछे वैज्ञानिकता ये थी
कि गांव के क्षेत्र के अलग अलग इलाके में अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिकी रहती है। कोई नदी के किनारे है, कोई आहर के किनारे है, कहीं बलुआही जमीन है, कहीं ऊंची जमीन है, कहीं अधिक वर्षा होने पर खेती हो सकती है, कहीं कम वर्षा में भी खेती हो सकती है। लोलैंड है, अपलैंड है, डीहलैंड है। गांव के अगल बगल के इलाके को डीहलैंड हमारे यहाँ कहते हैं। तो हर आदमी के खेत हर जगह हर ऐसे जोन में रखे जाते थे, ताकि अगर अधिक वर्षा हो तो उसके ऊंचे खेतों पर फसल हो जाए और हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर फसल चला जाए। और कम वर्षा हो तो जो लोलैंड है, सोत वाला इलाका, नदी के किनारे आहर का इलाका, वहां पर वर्षा हो जाए, वहां पर फसल हो जाए और सबके घर में फसल जाए। तो अगर चकबंदी हमारे यहाँ रहता और वर्षा अधिक होती और जिसका खेत ऊंच लोलैंड में रहता, उसका तो सब फसल बर्बाद हो जाता अतिवृष्टि में। और जिस तरह वर्षा नहीं होती तो ऊंचे जगह में खेती नहीं हो पाती, तो उसके घर में अनाज नहीं जाता। तो कितनी वैज्ञानिक परंपरा थी कि गांव के हर इलाके में जहां अलग अलग परिस्थितियां, कहीं नदियों का किनारा है, कहीं आहर है, कहीं डीहलैंड है, कहीं बगीचा है, तो सब जगह उनके खेत होते थे, ताकि किसी प्रकार की परिस्थिति में और हर आदमी के घर में फसल चला जाए और खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। तो ये क्या पॉलिसी हमारी गलत थी? और इनकी चकबंदी वाली पॉलिसी, पंजाब में बड़े पैमाने पर चकबंदी हुआ। चकबंदी अमेरिका में हो सकता, वहां आबादी कम है, 10,000 हेक्टेयर के खेत है, और उन खेतों में हेलीकॉप्टर से बीज और ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब डाले जाते हैं। हमारे यहाँ तो जनसंख्या अधिक है, क्या 1,000 एकड़ की खेती की कल्पना की जा सकती है? तो छोटे छोटे खेत, उसके बाद इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो हमारे यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग होती है, गहन कृषि। जैसे आप एक पौधा गमला में लगाते हैं और बागीचा में जंगल में उसी 100 पौधा, तो आपके गमले के पौधों को आप देखभाल करते हैं और जंगल में उसको कोई देखभाल नहीं करता। तो ये हमारे गमले का पौधा ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा हरा भरा रहता है। तो इसको इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग होता है क्योंकि जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या किसी भी अर्थव्यवस्था की, किसी समाज व्यवस्था की रीढ़ होती है। हम अपने गांव में देखते थे, और कम से कम 2-4 गांव को तो हम जानते ही कि गांव का सबसे बड़ा आदमी 100 बीघा खेत, और गांव का एक गरीब आदमी कम खेत, 5 भाई। तो 5 भाई की मां कहती थी कि हमारा 5 लड़का है, 5 दिशा में जाएगा, 5 खेत लेकर के आवेगा। खेत मतलब आएगा जिन्स, और एक भाई वाला तो एक ही जगह कहीं जाएगा ना। तो ज्वाइंट परिवार की हमारी परंपरा, ये कि हमारा फैमिली पॉलिसी नहीं थी। ज्वाइंट परिवार मतलब 4 भाई एक साथ, परदादा से लेकर के परपोता तक के परिवार एक साथ खाना बनना। और उसमें क्या होता था कि अगर कोई कमजोर है, कोई बीमार पड़ गया, किसी के डेथ हो गया, तो उसके बच्चों का लालन पालन सबसे ज्यादा होता। ज्वाइंट परिवार और एकाकी परिवार। अब बीमार पड़ता है और उस पति पत्नी, एक वो आपका जो मिस्त्री है, कल हमसे बात कर रहा था, उसकी एक बहन और बहनों दोनों मर गया, अभी परसों बात कर रहा है, और 4 बेटे हैं, बच्चे। अब उन बच्चों का देखभाल कौन करेगा? तो बनाइए पश्चिम के तट पर एकाकी परिवार और भूल जाइए अपनी परंपरा के संयुक्त परिवार को। तो ये हमारे जो पॉलिसी है, ये इतने महत्वपूर्ण है, और हजारों वर्षों के शोध के बाद अपने प्रकृति के साथ के इंटरेक्शन करते हुए हमारे पुरखों ने जो सारे सूत्र विकसित किए थे, वे बहुत ही वैज्ञानिक थे। और हम आज उन सूत्रों को भूल रहे हैं, और उन सूत्रों को भूल करके और पश्चिम के तट पर हम अपना रिसर्च को डेवलप कर रहे हैं।
आज इंडिया में जितने भी रिसर्च हो, उनका सोशल वैल्यू क्या है, उनका अप्लाइड वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू है? आप दुनिया भर का फंड लेकर के और करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर दे रहे हैं रिसर्च पर, पब्लिकेशन कर ले रहे हैं, और आपके पब्लिकेशन में दिन में कौन जाता है आपके पब्लिकेशन को लाइब्रेरी में देख? और अब तो और नहीं जाएगा। इस डिजिटल जमाने में आपके लाइब्रेरी में पब्लिकेशन आपका पढ़ने कौन जाएगा? तो आपने अपने कीमती जीवन के कीमती समय को और देश के कीमती रिसोर्स को रिसर्च के वेस्टर्न स्टाइल पर जिस तरह से आपने वेस्ट कर दिया, इसका खमियाजा क्या हमारा समाज नहीं भुगतेगा? और हमारी जो परंपराएं, भारतीय परंपराएं जो है, ये समाज आधारित है, ये पीपल वेलफेयर के लिए है, ये सोशल वेलफेयर के लिए है। तो जहां तक रिसर्च के बारे में बात करना है, तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिसर्च कीजिए, लेकिन ऐसा रिसर्च कीजिए कि उससे आपके सोसाइटी को वेलफेयर हो, आप समाज को साथ लेकर के, और उसकी क्या आवश्यकता है उस पर शोध कीजिए, अपना एनर्जी लगाइए, और पश्चिम के तर्ज पर और बड़े बड़े फंड लेकर के, प्रोजेक्ट लेकर के और रिसर्च करके सोसाइटी को कुछ नहीं दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है, देश का कुछ विकास नहीं। आप रिसर्च कीजिए, पब्लिक ओरिएंटेड, सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड रिसर्च कीजिए, और अपने रिसर्च थीम को और सोसाइटी के साथ जोड़िए, और सोचिए कि हमारे रिसर्च से उसको क्या फायदा होगा। तो रिसर्च के बारे में मुझको यह कहना है। और नए के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब से नए आया है तो मैं देख रहा हूं कि कॉलेजेज में, विश्वविद्यालयों में आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। गया कॉलेज के को ये प्लस मिल गया, तो एन कॉलेज को भी ये प्लस क्यों नहीं मिलेगा? कॉलेज ऑफ कॉमर्स को क्यों नहीं मिलेगा? विमेंस कॉलेज पटना को क्यों नहीं मिलेगा? और सारे लोग अपने कंपटीशन में लगे हुए, सुधार रहे हैं। मालतीधारी कॉलेज नैक में क्यों नहीं जाएगा? तो आप उस दृष्टि से विकास कर रहे हैं, जिससे आपका आउटलुक डेवलप हो रहा है, पूरे देश के साथ आप जुड़ रहे हैं, आप कंपटीशन में अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने व्यक्तित्व को लगा करके और काम कर रहे हैं। तो इसलिए नैक बहुत जरूरी था, और देर से आया हमारे देश में, लेकिन जब भी आया, देर आया दुरुस्त आया। तो नैक की यह उपयोगिता है, रिसर्च की यह उपयोगिता है। और हम लोगों ने लगभग 50 साल पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम करना शुरू किया था। एक छोटी सी हादसा हुई थी, और मैं एमए का विद्यार्थी था। ए भाई, तो मध्य विश्वविद्यालय का 71-73 का मेरा एमए का सेशन था, और एक बहुत बड़े विद्वान, थोड़ी कहानी, क्योंकि इसके पीछे जो हम लोग 50 साल से लगे हुए हैं, उसकी पृष्ठभूमि। तो देश के एक बहुत बड़े विद्वान, आप लोग उनको जानते ही होंगे, प्रोफेसर इनायत अहमद, ज्योग्राफी के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, और बाद में मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने थे, हमारे एग्जामिनर थे। और 50 नंबर का एक एमए का डिसर्टेशन था। तो मैंने ज्यादा काबिल बन करके, होशियार बन करके, एक्स्ट्रा स्मार्ट, और मैंने एक डायग्राम उसमें डाल दिया, हवाओं के दिशा को दिखलाने के लिए एक डायग्राम। आंकड़े गया एयरपोर्ट से लाए थे। तो इनायत साहब ने पूछा, इस नक्शे के लिए, इस डायग्राम के लिए आपने आंकड़ा कहाँ से लाया? मैंने कहा गया एयरपोर्ट से। गया एयरपोर्ट से आपके गांव की क्या दूरी? तो हमने कहा एरियल डिस्टेंस 20-25 किलोमीटर का। तो आंकड़ा वहां से क्यों लाया? तो मैंने कहा कि सर, हवा जब चलेगी तो 20-25 किलोमीटर के दूरी पर उसका डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा। यहाँ जो हवा चलेगी वही हवा वहां चलेगी। इसलिए मैंने अपने को जस्ट इतना सोचा ही नहीं था कि उतना बड़ा विद्वान आ जाएगा और हमको इस तरह से पूछेगा। तो खैर सटीक जवाब था। उसके बाद पूछा कि आपका ये अपने गांव का जो डिसर्टेशन है, उसे इस डायग्राम का क्या रिश्ता है? तो मित्रों, मुझको लगा कि अब तो मेरा सब कुछ गया है।
अब तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन गांव के बचपन के दिनों में गांव के चौपालों में हमने जो ये कहावतें सुनी थी, अब तत्काल मेरे मानस पटल पर उभरने लगा। और उस कहावत की चर्चा मैं आगे करूंगा। तो डूबता क्या न करता, मरता क्या न करता, डूबते को तिनका का सहारा, वो कहावत मेरे मेरे यादाश्त में आ गई। और मैंने कहा, सावन मास बहे पुरवैया, बेचो बरधा कीनो गैया। तो उन्होंने कहा कि इसको एक्सप्लेन करो, आगे करो। तो मैं सोच के नहीं गया था, और उसको जब मैं एक्सप्लेन किया तो प्रोफेसर इनायत जैसा, अहमद जैसा इंटरनेशनल स्कॉलर जो नंबर ही नहीं देते थे, और हमको हाईएस्ट नंबर दिए। और हमारे उस रिकॉर्ड से एक पन्ना फाड़ने लगे ऐसी कहावतों को नोट करने के लिए। तो 2-3 कहावत मैंने लिखवाया, तो उससे ज्यादा मुझको याद ही नहीं था, या उस समय परीक्षा के अफरा तफरी में याद नहीं आ रहा था। और उन्होंने मुझको हाईएस्ट, और उनका हाईएस्ट दिया हुआ डॉक्टर साहब, और वही मुझको टॉप करवा दिया, क्योंकि बाकी लोगों को उन्होंने बहुत कम नंबर दिया। और वो गैप जो हुआ, तो जो मेरे साथ सेकंड हुआ, वो गैप पूरा ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि ये कहावत, तो इस पर हमको रिसर्च करना चाहिए। तो उसी दिन मैंने घाघ भरने की किताब खरीदी। एग्जामिनेशन के बाद गया में आकर के सड़क पर किनारे में घाघ भरने की किताब बेच रहा था, तो मैंने खरीद लिया और उसका अध्ययन किया। और तब से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरे अपनी बेटी ने इसी पर काम किया, रिसर्च किया, पीएचडी का डिग्री, पारंपरिक भारतीय ज्ञान में भौगोलिक तथ्य, और देश के बड़े ज्योग्राफर उसके एग्जामिनर थे। तो फिर वेदर फोरकास्टिंग पर, जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज थे, उस पर हमने काम किया। और हमने अपने बेटे को टॉपिक दिया। और हमने जब वेस्टर्न वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को इंडियन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम से हम लोगों ने कंपेरिजन किया, तो लगा कि उनके वेदर फोरकास्टिंग तो सही होते ही नहीं, और उनके वेदर फोरकास्टिंग के लिए बड़े बड़े मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बनाने पड़े, जिसमें करोड़ों अरबों के रुपए खर्च होते, बड़े बड़े एक्सपर्ट लाने पड़ते हैं, जिनके कई कई लाख सैलरी होती है, एयर कंडीशन हॉल, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट्स, स्कॉलर। और रिजल्ट क्या, वो कहते हैं आज बारिश होगी, बारिश नहीं होती। वो कहते हैं आज हवा चलेगी, हवा नहीं चलती। आ, और हमारा ज्ञान जो है, वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल। हमारे गांव के लोग, जिनको आप अनपढ़ कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं, इलिटरेट अवश्य है, लेकिन बहुत बुद्धिजीवी है, वैज्ञानिक है, हवा के दिशा को देख करके फोरकास्ट, चिड़ियों के हरकत को देख करके, चींटियों के हरकत को देख करके, गिलहरी छिपकली के हरकत को देख करके, आसमान के रंग को देख करके, बादल के रंग को देख करके, और फोरकास्ट करते, और सटीक हो जाता है, सटीक हो जाता है। तो हमारा एक केवल वेदर फोरकास्टिंग नहीं, ज्ञान के जिस शाखा को भी दी। अभी आपके प्रचार महोदय से मेरी रास्ते में बात हो रही थी, और हमेशा बात होती है कि हमारा ज्योतिष का शास्त्र इतना सटीक है कि एक एक दिन का फोरकास्ट सही हो जाता है। और उनका सही होता है क्या? उनके पास ज्योतिष शास्त्र है क्या? अभी मैं कह रहा था कि मैं तो नहीं चाहता हूं कि अखबार का राशिफल मैं देख लूं, लेकिन आंख चोरी से देख लेती है, और देखती है तो हो जाता है। आज क्या होना है वो मैं देख करके आया, बड़ा ऑनर मिलने वाला, और बहुत बड़े संवाद होने वाली है। तो वो ज्योतिषी तो नहीं जानता था, और उसमें था कि मंगलवार के शाम तक आपका समय खराब होने वाला है। तो मैं चिंतित हूं, कुछ मंगलवार के शाम तक समय खराब। तो ये है भारतीय ज्ञान परंपरा, इतनी वैज्ञानिक, इतनी सटीक, इतनी ऑथेंटिक, और हम पश्चिम की तरफ भागे। लंदन में क्या रिसर्च हुआ, वाशिंगटन में क्या रिसर्च हुआ, जापान में क्या रिसर्च हुआ, जर्मनी में, हम उसके पीछे भागे।
और अपने विद्या को नकार रहे हैं। तो मित्रों, आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि आप इंडियन नॉलेज सिस्टम पर कंसंट्रेट कीजिए। आने वाला जमाना इंडियन नॉलेज सिस्टम का होगा। और जब मेरी बेटी जब इस टॉपिक पर काम कर रही, भारतीय परंपराओं में भौगोलिक ज्ञान की वैज्ञानिकता, तो कई बड़े बड़े पटना यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड विद्वान, देवेंद्र क्या करता है, कौन कौन टॉपिक लाता है, क्या कर रहा है। अब आज देखिए वो किताब छपने जा रही है और उसी का जमाना आ गया। तो कुल मिलाकर के मुझको ये कहना है कि हमारी परंपरा ऐसी है कि जीवन के हर क्षेत्र, मेडिकल साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, कोई विज्ञान की कोई शाखा ले लीजिए, हमारे यहाँ आज से ज्यादा विकसित जमाना था। आज ये एटम बम की बात कर रहे हैं और उस समय भी तो बम था। आज ये टेलीविजन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आपको हम ग्लोबल बना दे रहे हैं। और उस समय क्या हो रहा था? संजय महाभारत को देख रहा था कि नहीं देख रहा था? दृष्टांत को सुना रहा था कि नहीं सुना? तो कोई टेक्नोलॉजी थी कि नहीं? और आज तो एटम बम चला देगा और उसको वापस लेने की क्षमता नहीं। उस समय तो वापस ले सकते। तो युद्ध का क्षेत्र हो, शांति का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, हमारी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी। और एक एक सेंटेंस जो है, हिंदी की मैडम है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज कहा गया है क्या? अब उस जमाने के साहित्य को पढ़ लीजिए और समाज में क्या हो रहा था आप जान जाइएगा। आज का अखबार उठाइए, क्या देखते हैं? मारधाड़ यही सब हो रही। और पहले हम लोग के यहाँ मैट्रिकुलेशन में एक न्यूज़पेपर कटिंग आता था, शायद आपके जमाने में था कि नहीं, अंग्रेजी में 15 नंबर का न्यूज़पेपर का पैसे, और उसमें सवाल रहता था और जवाब रहता था 15 नंबर का। आज न्यूज़पेपर और हम लोग का कहा जाता था कि अंग्रेजी हिंदी के अखबार पढ़िए, भाषा सुधर जाएगी। आज अगर हिंदी अंग्रेजी के अखबार पढ़िए, भाषा बिगड़ जाए। तो ये हमारी परंपरा। तो दो चार उदाहरण के माध्यम से हम लोग अपनी परंपराओं के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी परंपरा कितनी वैज्ञानिक थी, कितनी सक्षम थी, कितनी सशक्त थी। तो आज का टॉपिक है कि ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान के भारतीय पारंपरिक तकनीक और साइंटिफिक अप्रेजल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन टेक्निक्स ऑफ वेदर फोरकास्ट। तो इस पर हम आज 2-3 उदाहरण के साथ हम बात करेंगे और आपके सामने ये बताने का प्रयास करेंगे कि वेदर फोरकास्टिंग के हमारे सिस्टम कितने मौजूद थे, कितने सही थे। वो भी बताइए, इसके नीचे उठाइए। इंडिया होल्ड्स अ वास्ट repository of traditional scientific wisdom in weather forecasting. This knowledge has evolved from centuries of close observation and deep human nature interaction, which has been rooted in ecological, cultural, and regional context. It embodies both scientific observation and traditional wisdom. It has been preserved through oral traditions, including folklores, folk songs, folk tones, and proverbs. These insights form a living heritage. तो हमारी ये जो परंपराएं हैं, गांव में, लोक साहित्य में, लोकगीतों में, लोक कथाओं में अभी भी प्रिजर्व है। और हम जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, वैसे हमारे लोगों के पास ये कथाएं हैं और हम आवश्यकता है कि उन कथाओं को, उन गीतों को संग्रहित करें और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करें। ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग मेथड्स complement modern methodology by offering ecological sensitivity and practical applicability. Despite being marginalized, they continue to provide region-specific
accuracy, and promote sustainability in weather understanding. Okay. Objective of the study. First, documentation and analysis. It is very important to document, analyze, and scientifically evaluate India's oral traditions and indigenous methods of weather forecasting. Secondly, regional indicators. To examine region-specific natural indicators such as animal behavior, cloud formation, wind pattern, and other environmental signs used in traditional forecasting. Scientific appraisal is also important to assess the scientific validity, predictive accuracy, and practical reliability of these traditional forecasting systems. Cultural and ecological significance is to explore the cultural, ecological, and philosophical dimensions of folklores, proverbs, and rural knowledge associated with weather prediction. Comparative evaluation is also very important. It is also necessary to compare traditional forecasting techniques with modern meteorological tools and approaches, particularly in rural agrarian context. Preservation and integration. To preserve, validate, and integrate traditional Indian weather forecasting techniques into modern scientific system to enhance climate resilience and sustainability. It is also necessary to promote systematic documentation and multilingual translation, regional languages, Hindi, English, and others, for broader accessibility and global engagement. Scientific and institutional development is also necessary to encourage the establishment of dedicated research centers, museums, and academic curricula for scientific exploration, preservation, and integration, transmission of indigenous forecasting knowledge. Global recognition and collaboration should also be promoted. International academic collaboration, ensuring recognition of India's traditional weather forecasting. Research and design and data collection. The study adopts mixed methods and multidisciplinary approach, integrating qualitative and quantitative techniques. Ethnographic fieldwork conducted across diverse climatic regions of India. Interviews and participatory observation with rural elders, farmers, and community experts. Documentation of oral and cultural sources like folk songs, proverbs, and regional narratives. Comprehensive literature review to conceptualize indigenous forecasting methods and identify research gaps. Traditional classification of seasons. Modern system. In modern system, we have winter, summer, and monsoon. There are only 3 seasons: winter, summer, and rainy. But traditional Indian system has 6 seasons: Vasant, Grishma, Pravrit, Sharad, Hemant, Shishir. Each aligned with Hindu calendar, months, and climatic change, which reflects nuanced understanding of environmental traditions. And we have so many techniques, traditional techniques, to forecast the weather. So first of all, we will look at the wind directions as weather forecast indicators. Precipitation in Ganga Basin linked to southwest monsoon, which extends from the mid of June to mid of September. And we have a four couplet related. We have so many such four couplets.
but I have chosen a few. The first of all, about which I have mentioned earlier, जो पूर्वा पूर्वैया पावे सुखल नदी में नाव चलावे, जो पूर्वा पूर्वैया पावे सुखल नदी में नाव चलावे. The Purva Nakshatra falls in the later part of the rainy season, probably in the month of Bhado. And Bhado, the later part of Bhado, seems to be the end of the rainy season. And if in Purva Nakshatra, if the winds blows from the eastern direction, the rain will be so heavy that even in the dead river, there will be overflow of water, running of water. And it needs boat for navigation. The scientific review of the couplet is that during winds, easterly winds during Purva Nakshatra, it forms a cyclonic front. Friends, front is the junction line of two various type of winds coming from two different directions, having two different characteristics. And when the two air masses from two different directions, having two different conditions, it causes cyclones, storms, thunder, and the moisture-laden air is being pushed upwards to such a height that the gaseous water which is in gaseous form in the air is consolidates and take the shape of water, drop of water, and which is heavy than the air. So the air cannot bear the weight of that water, drop of water, and it becomes rain, and it causes rains. So whenever the wind from the eastern direction in the Purva Nakshatra blows, it experiences a heavy rain, unexpected rain. So whenever in Purva Nakshatra, such type of wind were blowing, our elders in villages used to forecast that between 10-20 hours, it will be so excessive rain, the river will be flooded. River will be flooded. And our local river surrounding our village exactly experiences high floods. So what type of technique we had? What type of technique and knowledge our forefathers have evolved? Only after experiencing the direction of wind, they used to forecast that there is a heavy rain coming and there is drop in betting. So this is the authenticity and this is the power of Indian knowledge system, traditional Indian knowledge system. Friends, we have so many couplets. All through visualize the illustration, we have tried to portray the gist of the couplet, the scientific fragrance, essence of the couplet through
another couplet, and which had motivated me, a man like me, to work in this field. सावन मास बहे पुरबैया, बेचो बरधा कीनो गैया. A सावन मास comes sometimes in late June and sometimes in early July. And this is the time of onset of southwestern monsoon. This is the beginning of the rainy season in our country, in North India especially. And when the wind from eastern direction, we are blowing, our people in the choppers become very anxious. And in the evening chopal, in the morning chopal, their discussions we are started. That this time, in this Savan, easterly wind is blowing, and it will cause drought. Friends, see the exactness, see the authenticity, see the scientific essence of our traditional Indian knowledge. That only after experiencing the direction of wind from eastern direction in Savan month of Savan, mid-June or early July, the beginning of the rainy season, if the wind comes from easterly direction, it symbolizes that the Lord is in the way. In the future, we have to face famine condition. And our, particularly the Gangetic Plain, is the monsoon-oriented, rain-oriented agricultural system. And this, when we overview and visualize the agricultural calendar of our country, perhaps some boys who feeling difficulty in understanding the English medium. So I feel that we should also explanation in Hindi and English both, hybrid multi-linguistic mode. So मित्रों, हमारे उत्तर भारत में खास करके बिहार में एग्रीकल्चर कैलेंडर का प्रारंभ मानसून के साथ होता है. खरीफ की फसलें, भदई की फसलें इसी समय लगाई जाती है और उनको बारिश चाहिए. बारिश अगर होगी ही नहीं तो खरीफ की फसल नहीं लगेंगे, भदई की फसल भी नहीं लगेंगे, तो फेमाइन आ जाएगा. तो our forecast system not only forecast the coming weather condition, but it also suggests the alternative ideas also. So they fix their agricultural calendar. They swing their agricultural calendar according to the forecasts. So in the in the Savan, June, July, they become confirmed that the rain is no bhadai crop, no baghani crop will be there.
and go back to our villages, collect such knowledges. Collect such knowledge, translate it scientifically. Through this diagram, we have tried to portray the southwest onset of southwestern monsoon. In the Bay of Bengal, the southwestern monsoon comes around 1st of June. The last Jesta and up to Gangetic plain, middle Ganga plain, it reaches till 15th of June. So this is the map which shows the movement of southwestern monsoon. The coming monsoon. These maps show the wind pressure of wind. It is a scientific term, but I don't want to make it so technical, so I skip. Rain. The mechanism of rainfall. Look at the diagram. Two types of winds having two different characteristics. Wind coming from two directions and meeting along a line. The moisture-laden light easterly winds is coming from the eastern direction. That is from Bay of Bengal. And this side, the wind is dry, coming from the Western India, from the Thar Desert. And when they collide, wherever and whenever the two winds from two directions, having two different distinct characteristics, wind collide to each other, a line of junction is being created. And the moisture-laden wind is light, it is easterly. It climbs over the junction, go upsides, forms the clouds, condensation takes place, water dew forms, and rainfall occurs. So this is our scientific stage. Only on the basis of direction of observation of direction of winds, our forefathers were capable to forecast the weather, and they were not only the weather forecaster, but as I have seen through that couplet, Saban Mas Bahepur Bhaiya, Becho Bardha Kino Bhaiya, applied aspect has also been suggested through our such scientific knowledge. This is the explanation which I have already we have explained. Just a minute. Because of absence of any obstruction which is necessary for rainfall, it causes drought and crop failure in middle Ganga Valley. Westerly winds given
give rain in summer, July, August, in middle Ganga belt. Thus, the forecast has been concluded. Oxen, which are the pillars of the agrarian economy of the region, became useless burden and liability for the farmers. And if the westerly blows in the south, if the westerly blows in the south, the wind from the western direction blows in the south, it causes floods and it causes cloudiness, dew formation, water gaseous condensation, and causes rainfall. And it falls as rain, and it is being resulted into good crops. This is the first half of the rainy season in this part of the country, Sabah. Another technique, cloud patterns and rainfall. Cloud features, shape of clouds, color of clouds, movement of clouds also have been guiding our villagers, our forefathers, to forecast the coming season. Dark cumulonimbus clouds indicate imminent heavy rain. अगर आसमान में काले बादल घिर जाएं तो आप समझिए तुरंत वर्षा होने वाली। आप भी अनुभव कीजिए, जब आप निकले रहते हैं घर से और अचानक सावन भादों में काले काले बादल घिर आए और तुरंत वर्षा हो। How authentic, how absolute, correct is our techniques. Fast moving eastern clouds. Fast moving eastern clouds. In the beginning of Asar indicates the onset of monsoon, the coming monsoon. Couplet. घटा घरा घोर जब छाए, बिजुली चमके, बरसात आए. जब जेठ की तपिश के बाद, तपती हुई दोपहरी के बाद, आषाढ़ और 15 जून के आसपास जब अचानक घनघोर घटा छा जाए और बिजली चमकने लगे, तो समझिए रेनी सीजन इज कमिंग. Rainy season is coming on your doorstep. How concrete is our technique? चलाइए ना यार, कैसे बंद जाता है. और उसके बाद देखिए, ये तो हवाओं की दिशाओं को देख करके ऐसे हजारों कॉम्प्लेक्स. There are thousands of proverbs, thousands of folklores, thousands stories for forecasting the coming weather on the basis of direction of winds and on the characteristics of clouds. Now, come to the behavior of animals. Beaver birds, बाया छोटी छोटी चिड़िया, आप नजरअंदाज कर देते हो. ये छोटी चिड़िया बाया, बीवर बर्ड, serve as natural indicators for monsoon prediction in India. Traditional communities have long observed their nesting behavior to forecast weather. Nest orientation, structure, and location reflect
reflect anticipation of rainfall and wind patterns, demonstrates deep ecological intelligence and atmospheric sensitivity of the small bird via beaver bird. Beaver birds and monsoon prediction. See the correlation between beaver birds and monsoon prediction. How interesting is it? How scientific tradition is this? Beaver birds nest orientation predicts monsoon behavior. West facing rains, late monsoon rains, easterly winds. East facing rains, early monsoon rains, westerly winds. Downward rains indicates rainfall throughout the season. Next reflects bird sensitivity to humidity, air pressure, and wind. Right. Beaver bird nests are intricately woven, elongated, and highly durable, made from a strong, flexible leaf fibers, water resistant, and windproof, typically suspended from tall trees like palms or reeds for protection. Design offers insulation and resilience against environmental stress. The beaver bird, Baya, you might have seen. This is the beaver bird, very small, very teeny, very lovely. This is the nest. Okay. Nest. No, Baya. Beaver birds are very small, laborious, having good breathing skills. Their nests are very strong, durable, rainproof, and airtight. Neat nests with a strong threads of leaves, entrance in reverse direction of the coming rain. Direction of entrance shows super sense of coming weather. Beaver birds are weather forecasting. यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि छोटी सी नन्ही सी चिड़िया बहुत प्यारी सी फुदकती हुई आपको गांव के खेतों में खलिहानों में दिखती है, लेकिन आप नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हमारे गांव के पुरखे इस चिड़िया के बिहेवियर से और इनके घोंसलों के निर्माण से आगामी वेदर को फोरकास्ट करते थे, सेंस करते थे। तो जब वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने लगता था तो गांव में हमारे चौपालों में अगर कोई आदमी, अब जेठ खत्म होने वाला है, गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाली है, और गांव के चौपाल में कोई आकर कहता था आज तो मैंने बाया का खोता देखा, बहुत सूचना। तो बाकी लोग पूछते थे दरवाजा किधर का था। They were not interested in a khota, घोंसला. They were interested in the direction of the. तो अगर दरवाजा पूरब से है तो सावन में वर्षा नहीं होगी। पूरब से है तो सावन में वर्षा नहीं होगी। पश्चिम से है तो भादों में वर्षा नहीं होगी। नीचे है तो पूरे वर्षा ऋतु में वर्षा हो। क्यों? क्योंकि इनके पास सुपर सेंस होता है, आगामी मौसम के पूर्वानुमान का सुपर सेंस। अगर ये इतने मजबूत बनाते हैं तिनकों को नोच नोच करके, आप कभी देखिएगा कि इतना मजबूत बनाते हैं कि तेज आंधी में, झंझावात में, तूफान में भी इनके घोंसले गिरते नहीं है, टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है। और इन्वायरमेंट का, विंड प्रेशर का, एयर प्रेशर का, वर्षा का इनके पास जान लेने का सुपर सेंस है। और उसके अनुसार ये ऊंची जगह पर, ताकि नीचे
न मनुष्य और दूसरे जीव जंतु इनके घोंसला को बर्बाद न कर दें, इसलिए ऊंचे तारों के पेड़ों को ऊंचाइयों पर लगाते हैं और तेज हवा में हिलती हिलती है, झूलती है। तो अगर इनका दरवाजा मित्रों पूरब से है तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वर्षा नहीं होने वाली है, क्योंकि तब तो वर्षा पछुआ से न होगी। अभी हमने देखा ना कि सावन के महीने में जब पछुआ हवा चलेगी तब वर्षा होगी। तो वर्षा के झोंके पश्चिम से आएंगे, पूरब से नहीं आएंगे। और वर्षा के झोंकों के डायरेक्शन में अगर ये अपना दरवाजा बना देंगे, इनके दरवाजे में तो पानी भर जाएगा, इनके अंडे बच्चे सब खराब हो जाएंगे। देखिए कितना सुपर सेंसिटिव। तब ये दरवाजे पूरब से बना, जब पश्चिम से बनाते हैं तो इसका मतलब कि लेट मानसून में वर्षा नहीं होने वाली है, भादों में वर्षा नहीं होने वाली है, और वर्षा सावन में होगी। क्योंकि अगर पछुआ पूरब से वर्षा होगी सावन में, इनके घोंसले बर्बाद हो जाएंगे, इनके बच्चे अंडे खराब हो जाएंगे, इनके घोंसले खराब हो जाएंगे। तो ये पश्चिम का दरवाजा बनाते हैं। और जब नीचे का दरवाजा बनाते हैं, इसका मतलब कि पूरे वर्षा ऋतु में कभी उत्तर के डायरेक्शन से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से, कभी पश्चिम से वर्षा हो। अब डिस्कशन में वो जो इन्फॉर्मर होते थे हमारे गांव के, पश्चिम की तरफ दरवाजा बनाया। इसका मतलब कि सावन में वर्षा होगी, भदाई फसल लगाओ, खरीफ भी लगाओ। अगर दरवाजा पश्चिम से पूरब से है तो भादों में वर्षा होगी। अघानी अघानी मतलब धान की फसल मत लगाओ, भदाई लगाओ। अगर नीचे की तरफ है दरवाजा, देखिए डायरेक्शन ऑफ डोर, तो मतलब पूरे वर्षा ऋतु में वर्षा होगी तो सारे फसल होंगे, अघनी, रबी, भदाई सब फसल होंगे और बम्पर क्रॉपिंग होगा। तो ये इस चिड़ियों के बिहेवियर से और बहुत सारे जीव जंतुओं के बिहेवियर से हमारे जो पुरखे थे, उनके पास जो ज्ञान था वेदर फोरकास्टिंग का, ये सटीक अनुमान लगाते थे। और आज देखिए ना, वेदर फोरकास्टिंग जो बड़े बड़े मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से वेदर फोरकास्टिंग कहाँ सही होती है, लेकिन ये हमारे टेक्निक्स है, इनसे वेदर फोरकास्टिंग सही हो जाता है। तो अब ये और लंबा है, तो कितना समय और है कि खत्म, तो खत्म कर देते हैं। तो हम लोग चूंकि इस पर काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, जल्दी उठाते जाएंगे। तो हाँ उठाते जाएंगे। तो इस तरह से चिड़ियों के हरकत को देख करके, जीव जंतुओं की हरकत, अगर चिट्टी खूब चलने लगती थी, इसका मतलब होता है कि बरसात आने वाली। चिट्टी अगर नीचे से ऊपर जा रही है और बड़ी संख्या में जा रही है सावन में, भादों, तो समझते थे वर्षा होने वाली। क्योंकि चिट्टी तो जमीन में रहती है, भीतर रहती है। खूब वर्षा होगी, जमीन ये डूब जाएगा, उसके घर खराब हो जाएंगे, ऊपर भागने लगे। गिरगिट अगर उल्टा पेड़ पर चढ़ने लगे तो बहुत वर्षा होने वाली। तो इस तरह से हजारों, मतलब एक एक, आप गांव में जाइए, बुजुर्गों से बात कीजिए, उनके पास इस प्रकार के जीवन के हर क्षेत्र के हजारों हजार टेक्निक्स हैं, और पूरे देश में ऐसे टेक्निक्स भरे पड़े। एक दो छोटा सा एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में एक कहावत है कि ये कौवा अगर घोंसला ऊपर में बनावे, पेड़ के ऊपर में बनावे, तो समझिए वर्षा नहीं होगी। बीच में बनावे तो समझिए मध्यम स्तर की वर्षा। नीचे वृक्ष के नीचे वाले हिस्से में बनावे तो घनघोर वर्षा। तो ऐसे लाखों लाखों एग्जाम्पल्स हैं हमारे ट्रेडिशन में, जो न केवल वेदर फोरकास्टिंग को बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए हमें वैज्ञानिक डायरेक्शन देते हैं। और इसकी तुलना पश्चिम के ज्ञान से तो हो ही नहीं सकती है। तो आवश्यकता इस बात की है
कि पूरे देश भर के ऐसे नॉलेजेज को हम एकत्र करें, उनको डिकोड करें, उनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करें और हर भाषा में उसका ट्रांसलेशन करें और विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेशन करें और खूब चिल्ला चिल्ला करके पूरे विश्व में इसको प्रोपेगेट करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि भारत की जो ज्ञान है, भारत का विज्ञान जो है कितना सुपीरियर है, कितना सार्थक है और कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए प्राचार्य महोदय हैं यहाँ पर और अभी इनकी लंबी सर्विस है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। तो जब कभी भी इनको मौका मिले और इनको जीवन में मौका मिलेगा, इनकी जो कर्मठता है और इनका जो लगन है और इनकी जो महत्वाकांक्षा है, तो अभी तो इनकी लंबी सर्विस है, तो जब कभी भी इनको मौका मिले तो मेरा निवेदन ये होगा कि सिलेबस में बड़े पैमाने पर इंडियन नॉलेज सिस्टम को डाला जाए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिंदी, साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कोई ज्ञान की ऐसी शाखा नहीं है जो भारत में विकसित नहीं थी और आज के जो उनके स्तर है उनसे काफी ऊंची नहीं थी। तो उनको रिवाइव करने की जरूरत है और उन पर सोचने की जरूरत है, उनको कलेक्ट करने की जरूरत है और जब कभी भी ताकत मिले तो सिलेबस में उसको ऐड करने की जरूरत है। और अगर ऐसा हो सका और हम लोग सब मिलकर के अगर इस प्रयास में लग सके तो न केवल भारत विश्व गुरु बन सकता है, बल्कि भारतीय ज्ञान एक बार फिर से पुनर्स्थापित हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम देश भर के ऐसे जो बिखरे हुए ज्ञान हैं उनको एकत्र करें, उनको डिकोड करें, उनकी वैज्ञानिकता को, उनके साइंटिफिक फ्रेगरेंस को, एसेंस को डिकोड करें और हर भाषा में उसको हम करें। और आज के जो डिजिटलाइजेशन है हम उसमें भी इसको डालें। जैसे आज जब बहस हुई तो आपका ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो हम लोग आते यहाँ पर 10-20 लोगों से बात करके चले जाते, लेकिन हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, ये देश भर में जा रहा है और जब कभी भी लोग इसको देखेंगे तो जाने कि हाँ इस प्रकार के टेक्नोलॉजी थे भारत में। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ अपने इस ज्ञान को भी जोड़े। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सबों को धन्यवाद, प्राचार्य महोदय को अलग से धन्यवाद। और ये जो इस कॉलेज के जो शिक्षक लोग हैं, जिस तन्मयता के साथ, जिस तत्परता के साथ लगे हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह कॉलेज जो है मालतीधारी कॉलेज हायर एजुकेशन का न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में अगुवा बनने के रास्ते पर बहुत तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। सर का एक लेक्चर और कभी हो, इतनी बड़ी स्लाइड नहीं थी Thank you, Professor, for delivering a nice lecture. Now, session is open for questionnaire and discussion. Any participants who are participate in online or offline, session is open for questionnaire. बहुत अच्छा रहा और मैं जानती थी कि बहुत ध्यान से सुन रही थी जब आप ट्रेडिशनल कॉलेज के बारे में बता रहे और रिसर्च के लिए प्रमोट कर रहे थे। हमारे देश में इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट किया ही जा रहा है हर जगह। और लास्ट में मैं सुन रही थी जीबी वाली बात जो आप कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप बता रहे थे कि मौसम के हिसाब से पहचान जाते हैं बाहर। तो मेरे मन में दो तीन बातें हैं कि नदी कॉलेज गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा। तो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जो है बाकी वो बहुत अच्छा है, लेकिन
ऐसा नहीं है कि फॉरेन में भी पाश्चात्य में हम जाए तो वहाँ भी बहुत कुछ अच्छी बातें नहीं, वहाँ भी बहुत अच्छी बातें, और हमें हमारी सोसाइटी को भी सीखने मिलने है कि हम वहाँ जाके बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने इंडिया में आके काम कर सकते। तो मेरा फील है कि एक समझदारी की भी जरूरत है, अगर वहाँ जाकर देखें। ये मेरा उम्मीद था, मैं क्वेश्चन कर क्वेश्चन है ऐसे कि कैसे हमारे यहाँ आदिवासी लोग, ठीक है, तो आदिवासी जो है वो जंगल और जंगली तो उनको कितना ज्ञान रहता है, सांप पालते तो कैसे ठीक करना है, अलग अलग टॉपिक्स भी नहीं कर पाते, लेकिन उन आदिवासियों को पता है कि किस तरह से वो ठीक होता है। तो उनके पास उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज है, फिर भी हम क्या देते हैं, आज हमारा आदिवासी समाज क्या हो रहा है, होते जा रहा है, हम अपने सारे देंगे कहीं ना कहीं जंगल जमीन है सब नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। दूसरी बात कि हमारी भारतीय सभ्यता अच्छी है, बताई जगह को सब में हिंदी अच्छी बात है, फिर भी हमारे यहाँ आवाज हमारे यहाँ लोग आए कि कोई ना कोई काम होते रहता है और हम परेशान हो, यही परेशान के सब ना हो सके, 10 दिनों में नहीं मिलता है। और हम देखो को भी परेशान से आप देख रहे हो तो मिलते तो यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो मूल जो परंपराओं से जुड़ा आदिवासी समाज उनसे गंगा और जमीन से जुड़ा है तो जा रहे कोई नहीं है हो गया आदिवासी वाला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हम पूरी तरह से डिनाई करते हैं सामंजस्य लेके चलने की आवश्यकता है, हम सीख सकते हैं। हमारे यहाँ अच्छी बात तो अच्छी है, वो भी हमारे यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छी बात लेके जाते हैं, सुंदर चीजें लेके जाते हैं। और जब मैं विदेशों में जाती हूँ सुनती भी हूँ कि आपके यहाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, यहाँ की वो सारी चीजें तारीफ कर और ठीक है वो अच्छी बात है। हमारे यहाँ बहुत देश हमें सुनने को मिलता है, प्रशंसा सुनने को मिलती है। हम अपनी देश में कुछ अच्छी बातें उनके यहाँ भी है, क्यों नहीं ना सकते हैं, ना समझदारी क्यों नहीं हम ना सकते। तीसरी बात ये है हमारे यहाँ इतनी अच्छी सत्ता है फिर भी हमारे गार्जियन या सभी लोग चाहते हैं हमारा बेटा कॉलेज चला जाए, कॉलेज की जॉब हो, सबका सपना रहता है और आपके बच्चों का भी ड्रीम रहता है। पहले की पेरेंट्स अकेले रहते हैं, डेथ हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है, वो अपने घर को ही देखते रहते हैं, लेकिन शरीर भी जाते। तो बहुत सारी बातें जो आज समाज को सोसाइटी को सोचने की आवश्यकता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, तो से ये अच्छी बात है सरकार शोध लाती है, तो फिर से एक बार जाती है बहुत सारी चीजें हैं तो भाषा में भी अच्छी है, तो काम करने वो बातें। देखिए मैडम बहुत धन्यवाद, लेकिन आप तो दर्शन शास्त्र की विदुषी हैं। सभ्यता कैसे इवॉल्व होता है, एक दिन में नहीं इवॉल्व होता। आप जानती हो आप दर्शन शास्त्र की विदुषी हैं और सब कुछ अच्छी विदुषी हैं। सभ्यता के इवॉल्व होने में ओवरनाइट नहीं होती। धर्म क्या, किसको धर्म? तो हमने जो अनुभव किया और हमने जो देखा कि दुनिया के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। और सभ्यता क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक परिवेश के साथ वहां के मानवों के अस्तित्व के रक्षा के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, एक प्रकार के प्राकृतिक परिवेश में वहां का मनुष्य जो अपने को जीवित रखने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए जो प्रयास करता है,
उसी प्रयास के बढ़ते बढ़ते हजारों वर्ष में उसकी परंपरा बन जाती है, उसकी सभ्यता बन जाती है, उसका धर्म बन जाता है। एक उदाहरण देखिए, दो चार मिनट डॉक्टर साहब, एक उदाहरण देखिए। मुसलमान लोग अपने मृतकों को जलाते नहीं है का? रोजा में एक ही दातुन से एक महीना बूंद हुई। उनके पानी का जो बर्तन है बदला ऐसा है कि एक एक बूंद पानी निकलता है। उनका पवित्र फल जो है खजूर। क्यों? इसलिए इस परंपरा का, इस धर्म का विकास डेजर्ट में, मरुस्थलों में हुआ, जहां पानी की कमी। तो उन्होंने अपने पानी का बर्तन ऐसा बनाया कि एक एक बूंद पानी का कंजर्वेशन, बर्बादी ना हो। लकड़ी है नहीं जलाने के लिए, जंगल तो है नहीं, वर्षा होती नहीं। बॉटनी के विद्वान है महिला विदुषी। तो डेजर्ट में पौधे होते हैं क्या? तो कहां से जलाएगा? लकड़ी नहीं है तो कहां जलाएगा? डिस्पोज तो करना। और रोज दातुन कहां से लावेगा? टहनी तो है नहीं उसके पास, वृक्ष तो है। तो गा देता है एक महीना तक पानी बूंद बूंद करके मलीदा बनाता है। भात का माड़ नहीं पसाता है। खिचड़ी वहां से हमने लिया जिसमें कम पानी चाहिए, हम माड़ पसाते हैं, वो मलीदा बनाते हैं। आप दर्शन शास्त्र के विदुषी के नाते इस पर विचार कीजिएगा। और हमारे यहाँ हम गाय की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और गाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे खेतों में, खलिहानों में, ट्रांसपोर्टेशन में, दूध के लिए हम गाय को उपयोग करते हैं। इसलिए हम गाय की पूजा करते हैं। इसलिए हम आम के पल्लव पूजा में लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आम के बड़े बड़े, हम केला लाते हैं, हमारे यहाँ केले के पौधे होते हैं, उनके यहाँ खजूर होता है, तो खजूर से को पवित्र समझते हैं। वो ऊंट की सवारी करते हैं, हम बैल के का रथ बनाते हैं। तो धर्म और परंपरा एक दिन में विकसित नहीं होती, इसके विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और एक प्रदेश की परंपरा का अध्ययन कीजिए तो पता चले, उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में पता चले। अब देखिए पहनावा, एक दो और उदाहरण देकर के आपके, और कभी और हम लोग बात करेंगे। हमारा पहनावा क्या है? इस इलाके का पहनावा क्या है? धोती। क्यों धोती? उनका पहनावा क्या है? लुंगी। क्यों लुंगी? दक्षिण भारत के लोग, हिंदू भी लुंगी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? हम धोती क्यों पहनते हैं? वो पतलून क्यों पहनते हैं? वो टाई क्यों लगाते हैं? हम चादर क्यों रखते हैं? तो ये बहुत गूढ़ विषय है मैडम, और इस पर बहुत डिस्कशन किया जा सकता है, और हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि परंपराएं जिस प्रदेश की है, उस प्रदेश की परंपराओं को जीवित रहना चाहिए। अगर उन परंपराओं से खेल कर दीजिएगा और बाहर के परंपरा को ले आइएगा, आपकी सभ्यता खराब हो जाएगी, आपकी विरासत खराब हो जाएगी, आपका हेरिडिटी खराब हो जाएगा। हमारे यहाँ ज्वाइंट परिवार की व्यवस्था है। अभी हमने आपको, आप जानते ही हैं, 5 भाई और एक भाई मर गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई, वही मालकिन बन जाती थी, सारा चाबी उसी को दे दिया जाता था ताकि वह अकेलापन नहीं फील करे। अभी भी हमारे समाज, हमारे भी परिवार की एक लड़की जवानी में विधवा, उस परिवार के मालकिन भी। और आप तो लंदन में पढ़ने चले गए और वहां से न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम लेकर के आ गए, समाज टूट गया, बिखर गए। तो नकल अच्छे चीजों की होनी चाहिए, उसकी बुरे चीजों की नकल हमने नकल किया कि नहीं किया?
ये तो हमने नहीं डेवलप किया, हालांकि हमारे यहाँ था, महाभारत में सब जगह अमोघ बाण सब था, लेकिन हमने खो दिया। आज उन्होंने डेवलप किया, अच्छी चीज को हमने अडॉप्ट किया कि नहीं किया? उनकी रेलगाड़ी को हमने अडॉप्ट किया कि नहीं किया? उनके मोटर गाड़ी को अडॉप्ट किया कि नहीं किया? लेकिन उनकी गलतियों को भी हमने अडॉप्ट कर लिया। हम दो, हमारे दो, और मर जाइए, विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, कल वो रो रहा था, आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसका भाई सब अलग हो गया और 4 बच्चे हैं, रो रहा था कि हमारे हमारे भगना भगनी को देखेगा कौन? आपने इन गलत चीजों को वहां से लेकर के अपने यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया। सारी दुर्व्यवस्था के कारण वही है। इसलिए उनकी चीजों को हम अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अडॉप्ट करने के पहले हम उसको परखेंगे। और अगर ये फैमिली तोड़ना कौन शुरू किया? जो लंदन में पढ़ने चले गए, जॉइंट परिवार के पैसे से लंदन में पढ़ने चले गए, वहां से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन के आ गए, भाई के बच्चों को छोड़ दिया, और हमारे पॉपुलेशन पॉलिसी को आपने छोड़ दिया, उनके अडॉप्ट कर लिया, हमारे एग्रीकल्चर कैलेंडर को छोड़ दिया, हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की बातों को आपने दरकिनार कर दिया और वहां से ला करके अडॉप्ट कर लिया। आपने जो सिलेबस बनाया आजादी के बाद यूनिवर्सिटी, ये क्या इंडियन नॉलेज का सिलेबस था? तो आपने तो बेरोजगारी पैदा कर दी। इसलिए मैडम, उनकी परंपराओं को हम क्यों अडॉप्ट करेंगे? हमारी परंपरा जब उनसे बेहतरीन है, उनसे सशक्त है, उनसे पुरानी है, उनसे ज्यादा आजमाया हुआ है, तो हम मूर्ख लोग हैं कि उनकी परंपराओं को अडॉप्ट करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने में कहाँ हमको परहेज है, क्योंकि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो विदेश में कहीं चाहिए हिंदी थोड़े, भोजपुरी मगही थोड़े समझेगा। हम अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन हम अपनी हिंदी और संस्कृत को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी परंपराओं में जो अच्छी बात है उन्हीं को अडॉप्ट करना है। उनकी परंपराओं की जो, और उनकी हर परंपरा को हम नहीं अडॉप्ट करेंगे। आदिवासियों को किसने बहकाया? कृष्ण मिशनरी चल रहे हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति पर आघात किसने किया? भारत के लोगों ने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। इसलिए आदिवासियों को अगर बचाना है तो उनको जाकर ट्रेनिंग दीजिए। ये क्रिश्चियन मिशनरी से दूर रहो, ये बर्बाद कर रहा है देश को। अब पोप आता है तब क्या कहता है? अगले 20 साल में भारत के हर गांव में गिरजाघर होंगे, चर्च होंगे। क्यों होंगे? हमारे धर्म पर खतरा, हमारी परंपरा पर खतरा, हमारे विरासत पर खतरा, हमारे देश पर खतरा, हमारे अस्तित्व पर खतरा। इसलिए अंध नकल नहीं करेंगे, जो अच्छी बातें हैं उसी का नकल करेंगे, और जो अच्छी बातें नहीं है उनका नकल नहीं करेंगे। तो मेरे समझ से तो ये बातें हैं, मेरी तो यही समझ है। मेरा आप जब लेक्चर दे रहे थे शुरुआत में एक छोटा सा डाउट था। आप बता रहे थे तुलना नक्षत्र के बारे में, आपको समझा रहे थे कि जो भैया ऐसा करके किसी प्लान बता रहे थे आप कि तुलना नक्षत्र में जब बीट रहता है, जब प्रभाव रहता है, पूर्वी हवा, हाँ पूर्वी हवा जो पूर्ण नक्षत्र में रहता है, तो सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि नक्षत्र की मान लो पूर्ण नक्षत्र का, क्योंकि 28 से 27 नक्षत्र होता है जो कि साथ मिलकर करती थी। तो ये जो पूर्ण नक्षत्र है, एक डायरेक्शन होता है, तारों का कॉन्फ़िगरेशन होता है, समझ नहीं आया, बस वही पूछना चाह रहे थे कि इसको है क्या, नक्षत्र क्या है? जैसे महीना, वर्ष को 12 महीनों में बांटते हैं, और महीना को सप्ताह में बांटते हैं, सप्ताह को दिन में बांटते हैं, दिन को घंटा और सेकंड मिनट में बांटते हैं। उसी तरह से साल भर को नक्षत्रों में बांटा गया है।
और 28 नक्षत्र हैं। तो लगभग सारे नक्षत्र 15-15 दिनों के होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र जो हथिया है, इसको किंग ऑफ द नक्षत्र कहा जाता है, वो 16 दिन का। तो वर्ष के एक खास भाग में जो नक्षत्र पड़ता है उसका एक खास नाम दिया गया है। तो ये आपका एक कैलेंडर है, इंडियन कैलेंडर, जो महीना में बटा हुआ है, दिन में, घड़ी में, घंटा में, लेकिन नक्षत्रों में बटा हुआ। क्या डॉक्टर आपको प्रिंसिपल साहब बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, इनसे हाँ, तो इनसे डिटेल में बात कर लीजिए। हो गया। Thank you, sir. Now we would like to invite our Dr. Shweta Bala ma'am for vote of thanks for this session. Welcome, ma'am, for this. Thank you, Shweta ma'am, for inviting me to present today's wonderful lectures, vote of thanks. First of all, this lecture is so interesting that without expressing my own opinion, I will not start vote of thanks. Sir, as I believe that in history, we find that civilization has occurred due to the environmental conditions, the geographical conditions, the topographical conditions, and geography, as you are the professor of geography. Geography has very deep impact in the creation of a civilization. The region, the rivers, the mountains, they have a deep impact on the development of certain traits, certain habits, certain skills, food habits, food practices, clothing. Everything is somewhere very much linked and integrated with the people of that region. You talked about the population. Of course, population has also this very trait that if the country or the land or the state is fertile, it will automatically breed larger population because it has the capacity to provide the sustainability things, the things that are important for their sustenance. But as time goes on, there are several changes that we find that affects the society, our tradition. We have seen many civilizations which has got lost due to this time changes. But Indian civilization is one such civilization which has not lost its essence. We still hold it. But this Indian knowledge system, the incorporation of IQAC in our studies, the need for this is like a renaissance that we saw in England or Western countries. Similarly, this Indian knowledge system is like going back to our own knowledge. And our own knowledge is so rich that Americans, the Britishers, they are still going and reading those texts and coming out. Now the researchers are proving that those knowledge were very much scientific. That is why we feel the need to go back because we ourselves were quite ignorant of the important knowledge, the golden lines that are written in our text. So research should be there in order to make it validated in front of the world. Though we know it, but we have to validate somewhere. That is why these patent words are coming. We have to do that.
Indian knowledge system again becomes very important because now we are the younger generations are, I think so, they are forgetting our roots, our traditions, which are very important and crucial. Why it is crucial? Because in our day-to-day life, our forefathers, our parents, our grandparents, they had such innumerous knowledge that they could have easily solved many things which we learned scholars, we are not able to do that. And at that time, we appear like a joker, not able to put things properly, not able to get medicated ourselves for simple disease as our forefathers could have easily, provided us with some herbal medicines. So that is why it is very important to get in touch with, understand the IKS, the Indian knowledge system, because somewhere we are out of our. So this was my opinion. Sir, I want to thank you for presenting such a wonderful lecture on the traditional knowledge in weather forecasting. The dohas, the muhavras that were the local muhavras that we used to say, the quality of the farmers, how they used to sense the weather because it was very much affecting their products. So their harvest was dependent on the weather and they knew how to understand when the rain is going to come and when it is going to be a dry season. All these things were very much predictable by them. Still now, our farmers, they have this knowledge and we have to go to them to understand that knowledge because we are not having that knowledge in our city boys and girls. So, sir, thank you once again for pointing out such golden things that comes from our tradition, from our traditional scientific knowledge that are there in our text and motivating us to motivating us and the participants out there joining us online to go back to our knowledge system and this so that we can stay happening in India. Only then we can make our nation, we can bring back the golden history of the nation that we were the center of knowledge. I would also like to thank our principal sir for inviting Professor Devendra sir here for organizing such wonderful lectures because all the resource persons, they are somewhere, they are coming here because of our principal sir and also his intense and keen interest in research and organizing such lectures which are research oriented. Thank you, sir, for providing us this golden opportunity for conducting such programs. I would also like to thank Manisha ma'am and all the teachers there and the research scholars and professors who are joining us online for being such an active participant, good listeners, and coming up with some good questions that are actually enhancing the quality of this faculty development program. I would also like to thank our technical team for running this program without any hindrance. And last but not the least, I would like to thank the convener of the program, Dr. Shweta Rai ma'am. She is like, she has got a very good brain, I must say, who has a Tata kind of knowledge where she is always ready with her inputs wherever we are falling, wherever there are some sort of
shortcoming that is coming, she is always ready with her help, with her assistance, with her knowledge. Thank you once again to all of you. Thank you. Now session is closed. We will wait for 5 minutes and the next session will start. So, dear participants, you please didn't connect yourself, and after 5 minutes we will start our third session, which is delivered by Dr. Kumari Bharti. आपको फिर मैं समाज
ऐसे पढ़ते हैं। Good afternoon to everyone. Now we will start our third session. That's lecture given by Dr. Kumari Bharti. Before to start our session, we will introduce Dr. Kumari Bharti. Dr. Kumari Bharti is an assistant professor in the Department of Philosophy at MD College, Nawalpur, Patna. With over 15 years of teaching experience at UG, PG, and MPhil level, she has actively contributed to academic research and teaching. Dr. Bharti has presented research papers in more than 35 national and international seminars, including the World Congress of Philosophy in Athens and Beijing. She authors the book श्री अरविंदो के दर्शन में विश्वा आपकी की अवधारणा and edited 6 academic books on Indian philosophy, society and culture. Her research work includes 28 publications in renowned journals. She has organized several academic seminars and received many awards, including the International Excellence Award in 2023 and Kalidas Award in 2021. She also holds various administrative roles in academic institutional development. So we would like to invite our colleague, enthusiastic colleague, Dr. Kumari Bharti, to give in a lecture on the topic of research, innovation, and extension. Welcome, Ms. Bharti. कैसे इसी को आगे लगाएंगे पहले आप बात तो कीजिए। Good afternoon to all respected dignitaries, the Honorable Principal, distinguished faculty members, and dear participants. I feel highly honored and privileged to be invited as a resource person in this faculty development program. I would like to express my sincere gratitude to the Principal Sir for giving me the wonderful opportunity.
to share my thought with such as esteemed audience. Today, I will be speaking on the topic research, innovation, and extension. This topic is very relevant in NAC accreditations. I hope this session will be interactive and beneficial for all of us. Let us begin our discussion. आपके पास भी रहना चाहिए। चल भी क्या हो गया इसे आगे से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। मैंने ये जो विषय बनाया है इसके पीछे मोटिव ये है कि हम कैसे अपना डेवलपमेंट करें कि इससे हमारा सीवी या हमें इम्प्रूवमेंट तो हो ही, साथ ही कॉलेज को भी नैक एक्रेडिटेशंस में मदद मिले। यही सब भावनाओं के साथ मैंने इस टॉपिक को चुना कि किस तरह से हम अपने रिसर्च को इम्प्रूव करें, किस तरह से किन किन एजेंसियों के पास जाएं कि हमें फंडिंग मिले, और किस तरह से किस तरह के पेपर में हमारा पब्लिकेशंस होने चाहिए। हम आमतौर पर किसी भी पेपर में अपना पब्लिकेशन करा लेते हैं, पीयर रिव्यूड में भी कराते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं कि वाकई पेपर पब्लिकेशन का मतलब क्या है। क्या वो साइटेशन देता है या नहीं देता है, एच इंडेक्स में आता है या नहीं आता है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं अपने पेपर प्रेजेंटेशन के थ्रू रख रही हूँ, और ये पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो नैक एक्रेडिटेशन से रिलेटेड है और हमारे फैकल्टीज के लिए ही है कि वो भी जाने समझें और डिटेल से हम अपने आप को इम्प्रूव करें अपने साथ साथ, जिससे हमारे कॉलेज को भी लाभ हो। सो today I will be speaking on the topic research, innovation and extension. सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमारा जो फंडिंग है, यानी कि टीचर्स रिसीविंग नेशनल या इंटरनेशनल फेलोशिप की मैं बात करूंगी। सबसे पहले नाउ ए क्वेश्चन, व्हाट इज ए फेलोशिप? ये फेलोशिप है क्या? A fellowship is a financial grant provided by government agency, universities, or international organizations to teachers and researchers. फेलोशिप वह अनुदान या वित्तीय सहायता होती है जो सरकार, विश्वविद्यालय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा शिक्षकों और शोधकर्ताओं को शोध कार्य के अध्ययन या अकादमिक विकास के लिए दी जाए। कुछ फेलोशिप के बारे में मैं बताती हूँ। जैसे यूजीसी ग्रांट कमीशन प्रोवाइड करती है रिसर्च फेलोशिप। ICSSR जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसोर्स है, उसके द्वारा डॉक्टर फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप हम पा सकते हैं। मैं बात करूंगी DST फेलोशिप, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस या टेक्नोलॉजी, इंस्पायर फेलोशिप, वुमेन साइंटिस्ट एंड अदर सपोर्टिंग फेलोशिप। अगर ICSSR के अलावा भी हम जाने और समझें तो हमारा ICPR भी है,
इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च जो मैनियस पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप एंड डॉक्टरल फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। इन सब के अलावा ICHR फेलोशिप भी है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भी जो है, उसके द्वारा भी हम बहुत सारे फेलोशिप और फाइनेंशियल फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। वहां से भी हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हैं। तो इन सारे फेलोशिप की बात करने की मतलब यह है कि हम समझें कि अगर हम किसी भी तरह का फेलोशिप लेते हैं इन संस्थाओं के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, तो सीधे सीधे हमारे बेनिफिट के साथ साथ हमारे कॉलेज NAC एक्रेडिटेशन में सीधा सीधा लाभ मिलता है, सीधे पॉइंट मिलती है। नेशनल के अलावा अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एजेंसियों की, तो कुछ इंटरनेशनल एजेंसियों की मैं बात करती हूँ कि जहां से मैं फेलोशिप हम ले, तो उसके द्वारा भी हम सीधे सीधे NAC में बेनिफिट पाते हैं। जैसे फुल ब्राइट फेलोशिप है, USA का है, तो ये भी बहुत अच्छा फेलोशिप है। डाड है, जर्मनी से मिलता है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन है, UK से मिलता है। जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस, JSPS पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो हमें क्या करना है? हमें इन सब फेलोशिप को लेनी है, प्रयास करना है, ताकि हम तो उन्नत हो ही, साथ साथ हमारा कॉलेज भी डेवलप हो, विकास। अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करूंगी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है इन सब फेलोशिप के पीछे। इनकरेज हाई क्वालिटी रिसर्च, शिक्षकों को उच्च स्तर का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रमोट इनोवेशन एंड नॉलेज डेवलपमेंट, नई ज्ञान परंपरा और नवाचार को बढ़ावा देना। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक सहयोग। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। Now, I would like to discuss the benefits of these fellowship. These fellowship provide maybe academic and professional advantage to teachers and researchers. So, first, financial support for researchers. ये शोध के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। For international research collaboration भी हो सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसियों से, और सीधे सीधे लाभान्वित होते हैं अगर हमें फंडिंग मिलती है। फंडिंग फॉर बुक्स, इक्विपमेंट एंड फील्ड उपकरण, फील्ड वर्क, शोध सामग्री, पुस्तकों और उपकरणों के लिए हम अनुदान पा सकते हैं। साथ ही कोलैबोरेट हो सकते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। अब हम सभी परिचित हैं UG से, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो मैं अभी डिस्कस करूंगी कि UGC किस तरह से हमारे लिए कार्य करती है और उसके क्या मिशन है, विजन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज ए statutory body of the government of India responsible for coordination, determinations and maintenance of standard in higher education. UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की वह संस्था है जो विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता, मान्यता और शैक्षिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करती है। Now we will discuss the functions of the University Grant Commission
the UGC plays a very important role in the development and regulations of higher education in India. हमारा UGC ग्रांट तरह से कार्य कर रहा है. It provides and colleges and all development. So we discuss the function, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, स्टैंडर्ड्स, उस शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, प्रोवाइडिंग फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट, शिक्षकों के लिए फेलोशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट देना. Now we will discuss the different type of universities that receive funding from University Grant Commission. मतलब मैं बताने जा रही हूँ कि यूजीसी ग्रांट कमीशन से किस किस तरह के चीजों के लिए हम फंडिंग ले सकते हैं, स्पेशली माइनर प्रोजेक्ट, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फेलोशिप. मैं चर्चा करना चाहूंगी, हालांकि ये ओल्ड हो चुका है. जब यूजीसी की बात करते हैं तो शैप आता है. शैप क्या है कि स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ये यूजीसी का, जिसमें कि सॉरी मैं बात करते समय पीपीटी तो आगे बढ़ाना ही भूल गई, मैं अपने ही दो में बोली जा रही थी. हाँ ओके सॉरी. तो लेवल ऑफ शैप क्या है? ये जो शैप है हमारा, इसका मतलब है स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम. हालांकि ये अभी यूजीसी में पुराना क्या है और इसकी जगह स्ट्राइड आ गया करते हैं. तो मैं इस बात की चर्चा करूंगी बोलूंगी क्योंकि अभी प्रेजेंट में नहीं है. तो यह एक योजना थी जो विश्वविद्यालयों और कॉलेज के विशेष विभागों को शोध और अध्ययन को मजबूत बनाने के लिए यूजीसी हमें सहायता दी. तो इसका लेवल है, लेवल ऑफ शैप, जैसे कि आपको पीपीटी में दिख रहा है DRS. ये DRS क्या है? डिपार्टमेंटल रिसर्च सपोर्ट. DSA डिपार्टमेंटल स्पेशल असिस्टेंट. जब हम DRS में इम्प्रूव होते हैं, जब हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और हम अच्छा करते थे, तो फिर हम DSA में और फिर कैश सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी में हम प्रवेश करते हैं. इसके उद्देश्य हैं विभागों को रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित करना, उन्नत शोध को बढ़ावा देना, अकादमिक उत्कृष्टता विकसित करना. हाँ, ये बात अवश्य है कि यूजीसी ने अब शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइड जैसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर दिया है. इसका उद्देश्य अंतर विषयक ट्रांसडिसिप्लिनरी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, जो कि देश की विकासशील अर्थव्यवस्था में सहायक है. जब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सैप एंड स्ट्राइड? क्या अंतर जो लेवल ऑफ शैप था और अभी जो स्ट्राइड आ गया है? देखिए, जब हम लोग स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम सैप की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न विभागों को मतलब शोध और उच्च अध्ययन के लिए सहायता दी जाती. ठीक है. और इसके अगर हम लोग देख लें, DRS देखें तो लेवल 1 है डिपार्टमेंटल रिसर्च सपोर्ट. DRS is the first level of the SHAP program. पर्पस क्या है आखिर DRS के पीछे? It aims to strengthen research activities in university departments where the potential for quality research. डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना ताकि क्वालिटी रिसर्च हो सके. अगर हम मेन फीचर्स में दें
तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, फंड फॉर financial support for research project, funds for books, journals, and laboratory equipment, assistance for organizing seminar, workshop, and conference, encouragement for PhD scholars, research, and academic publication. तो DRS जो था वो मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ सैप है, और अभी जो दिख रहा है वो DSA है, ये सेकंड लेवल ऑफ सैप। जब हम DRS में फंडिंग मिलती है तभी हम DSA में जाते हैं, यानी कि सेकंड लेवल ऑफ सैप। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंट, DSA इज द second level of SAP. Purpose, it is given to department that have successfully development a strong research activities during the DRS. अगर हम इसके फेज को समझें या पर्पस को समझें तो हाई क्वालिटी रिसर्च है, प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार, डेवलपमेंट ऑफ specialized facilities and infrastructures. In simple word, when a department at the DRS level, it may be upgrade to the DSA level for more advanced research work. अब मैं लेवल हमारा पहले था DRS, सेकंड में आई हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ श्रेणी की योजना है जिस उन्नत शोध और अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाता है। अगर हम बात कर लें, अपने एक कैश की बात करते हैं और हम समझना चाहें कि ये जो हायर स्टडीज है इसके लिए जो कैश के जरिए जो भी कुछ यूनिवर्सिटियों का किया गया है, क्योंकि सभी को ये प्रोवाइड नहीं होती है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सबको कैश प्रोग्राम का सबसे उच्चतर स्तर में हम रखते हैं। हालांकि आज के डेट में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये शैप का लेवल है इसको चेंज करके हम स्ट्राइड में आ गए। तो आज जो लेवल चल रहा है वो स्ट्राइड है, और यूजीसी जो प्रोवाइड कर रही है फंडिंग वो बहुत उच्च क्वालिटी की रिसर्च वर्क के लिए हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज को दी जा रही है और कुछ विभागों को दी जा रही है ताकि वे उन्नत से उन्नत कार्य कर सके। अगर हम समझना चाहें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF को, तो भारत सरकार ने अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया है। भविष्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी अनुदान राशियां इसी केंद्रीय निकाय के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह सैप जैसी योजनाओं का एक आधुनिक दौर है। तो इसके पीछे बस मैं चर्चा करना चाहूंगी कि क्वालिटी बेस्ड फंडिंग है, और नेक के जब हम मूल्यांकन में जाते हैं, एक्रीडिटेशन पे जाते हैं, तो केवल वही विभागीय संस्थान उच्च स्तरीय वित्तीय सहायता के पात्र हैं जिनका नेक ग्रेड A या उनसे अधिक है। यानी स्ट्राइड किसको मिलेगा? जिन संस्थाओं को नेक में A ग्रेड मिला है वो वही यूजीसी के स्ट्राइड में जाएंगे और उनको फंडिंग वहां से मिलेगा। अब बजट लेना इतना आसान नहीं हो गया है यूजीसी से, या स्ट्राइड में प्रवेश करना नहीं रह गया है, ये एक चैलेंज है। बल्कि विभाग द्वारा ग्रुप में किए गए शोध कार्यों
प्रकाशनों उसकी सामाजिक उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। साथ ही डिजिटल पारदर्शिता होनी चाहिए। सभी आवेदन प्रक्रियाएं यूजीसी ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से संचालित होनी चाहिए। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि यदि आप किसी विभाग के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो अब आपको स्ट्राइड योजना या अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के नवीनतम दिशा निर्देश के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा। इन सब के अलावा अब मैं डिस्कस करना चाहूंगी DST FIST फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग को ही दिया जा रहा है। तो जब हम GST की बात करते हैं तो GST जो है हम कह सकते हैं फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। GST is a scheme of the Department of Science and Technology to strengthen science and technology infrastructure in universities, colleges। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स को ले लें कि अगर GST साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिलता है, विभाग को मिलता है, कॉलेजेस को मिलता है, तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है। तो मॉडर्न लेबोरेटरी के लिए दिया जा सकता है, हम लाभ उठा सकते हैं। इक्विपमेंट है, बहुत सारे यंत्र हैं, मशीनें हैं, मंगा सकते हैं। रिसर्च फैसिलिटी है, इम्प्रूवमेंट ऑफ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। GST के द्वारा फंड को मंगाएं और अपने कॉलेज के लेबोरेटरी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने विभाग को मजबूत करें। जो इंटरनेट कनेक्शन इज अनेबल। उद्देश्य अगर हम पर्पस समझना चाहें तो यही सब है कि आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण मंगाएं, कंप्यूटर और शोध उपकरण मंगाएं, अनुसंधान एक वातावरण में सुधार लाएं, जिससे कि हमारा प्रयोगशाला, हमारा हमारे जो एकेडमिक माहौल है साइंस के, या वो हमारा डेवलप हो सके। बेनिफिट्स अगर हम इनके बेनिफिट्स को देखते हैं तो सेम ही है। आगे बढ़ती हूँ मैं, कहाँ ले आए इंडियन काउंसिल, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि जब हमारी एक एजेंसी है ICSSR, हम लोग सब जानते हैं द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो ये जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, ये हमें प्रमोट करता है कि हम विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, फेलोशिप्स लें, और बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, नए मुद्दे हैं, उन पे काम करें और खुद का डेवलपमेंट करें ही साथ साथ NAC एक्रेडिटेशन में भी प्रवेश करें। तो अगर हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोवाइड होता है ICSSR के द्वारा, तो दिख रहा है डॉक्टरल फेलोशिप है, सीनियर फेलोशिप है, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है, साथ ही माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए भी यह संस्था प्रोवाइड करती है। इन सब के अलावा भी मैं बता दूं कि वर्कशॉप के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही हम देखें FDP करना चाहें तो ये संस्था FDP के लिए भी प्रोवाइड करती है। तो हम इन संस्थाओं का लाभ उठाएंगे, क्योंकि हमें अगर NAC एक्रेडिटेशन में जाना है तो इन संस्थाओं से फंडिंग लेनी ही होगी। Now let us discuss on which point marks are given in NAC assessment। अगर हम जा रहे हैं, अगर और आगे बात करें कि NAC एक्रेडिटेशन में और किस तरह के फंडिंग से हम लाभ ले सकते हैं, तो आप देखिए फंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है जो NAC में मिलती है। फंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, इंटरनेशनल बॉडी, डॉक्यूमेंट्स, चेयर, ग्रांट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्च प्रोजेक्ट टीचर्स बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जब हम चाहते हैं कि हम और अच्छा करें
तो हमें इंडस्ट्रियों के साथ कोलैबोरेट होना होगा, उनसे सहयोग बनाना होगा। हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज है, उनसे सहयोग लेना होगा। और जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है, सबके कोलैबोरेट होके हम जब काम करते हैं तो निश्चित ही हम नैक में A++ में जा रहे हैं, और होता अपने आप को हम देख पा रहे हैं। तो चलिए हमारी जो इंडस्ट्री फंडिंग है, किस तरह से इंडस्ट्री फंडिंग देती है, इसको हम समझें। तो जब कोई उद्योग या कंपनी किसी नए उत्पाद, तकनीक, प्रक्रिया या सामाजिक समस्या के समाधान के लिए शोध कराना चाहती है, तो वह विश्वविद्यालय या शोध संस्थान को पैसा देकर शोध परियोजना देती। इसे उद्योग प्रायोजित शोध कहा जाता है, जो कि यहाँ पे भी है। इंडस्ट्री फंडिंग रेफर टू फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय companies or industries to universities or teacher for research and innovation in promote industry academic collaboration. Research usually focus on practical problems, technology development and product innovations. एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो रिसर्च फंडिंग फ्रॉम कंपनी, क्या क्या कंपनियां हमको दे रही है, कि कौन कौन कंपनी हमको रिसर्च के लिए फेलोशिप दे सकती है, या हम कह सके कि हमें फंडिंग दे सकते। टाटा ग्रुप को देखिए, टाटा ग्रुप प्रोवाइड करती है आपको रिसर्च के लिए फंडिंग। अगर हम कोई शोध कार्य करते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं, कोई नई समस्या पे काम करते हैं, या टाटा आज कोई लाती है, स्कीम लाती है, उस पर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम फंडिंग पा रहे हैं। तो टाटा ग्रुप्स है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, तो इन सब के द्वारा हम प्रोजेक्ट ला सकते हैं इंडस्ट्री से कोलैबोरेट होकर के। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि आखिर फायदा क्या होगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च, प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। हम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, फंडिंग तो पाएंगे ही, साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए भी हमें नए नए स्टेज मिलेंगे और फंडिंग भी प्राप्त होगी। मान लीजिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं इन बातों को, कि मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, अब उसको किसी नए दवा पे शोध कर, ठीक है, फार्मा वाले अगर कोई नया दवा पे शोध करना चाहेंगे तो वो क्या करें? निश्चित रूप से वो अपनी स्कीम निकालेंगे, अपना प्रपोजल निकालेंगे, ये टॉपिक है, आप इसमें काम कीजिए, और जो लोग भी अप्लाई करेंगे अगर उनका प्रपोजल पसंद आता है तो वह उन्हें फंड देगी शोध करवाए। तो हमें समझना है कि हम किस तरह से कंपनियों से भी जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे नैक एग्रीगेशन में जाते हैं, बिल्कुल इसका बहुत बहुत पॉइंट मिलता है। Now I would like to discuss some international bodies that provide financial assistance and support for research development and academic activities across different countries. अब मैं बात करूंगी इंटरनेशनल बॉडीज की। क्या क्या बॉडीज इंटरनेशनल बॉडी जो हमें हमारे कंट्री को से जुड़े, हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े, हमसे जुड़े, और हम किस तरह से बेनिफिट प्राप्त कर सके, लाभान्वित हो सके। तो देखिए, फंडिंग फॉर इंटरनेशनल बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो रिसर्च ग्रांट प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन। अब उसमें से सबकी तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन मेजर क्या क्या है जो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज है, किस किस मेजर इंटरनेशनल बॉडी से हम कोलैबोरेट हो सकते हैं। कुछ नाम मैंने लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, फ्लॉड फाउंडेशन, तो है। प्रभाकर जी लगता है रुक गया, थोड़ा देखिए वहाँ, अच्छा ठीक है। तो इस तरह की कोई कुछ हमारे जो इंटरनेशनल बॉडीज है हम उसको समझेंगे। हम जब बात करते हैं यूनेस्को की तो हम लोग सब जानते हैं
UNESCO is a specialized agency of the international establishment in 1945 में हमारा यूनेस्को एस्टैब्लिश हुआ। क्या क्या प्रमोट करता है हमारा यूनेस्को? तो जब हम प्रमोशन की बात देखते हैं तो प्रमोट एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर एंड पीस। तो यूनेस्को का जो जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पीस के लिए रहता है, कल्चर के लिए रहता है, साइंस के लिए है और एजुकेशन। अब मैं बात करूंगी कि वर्ल्ड बैंक को हम देख रहे हैं। तो ये जो विश्व बैंक है ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और ये भी फंडिंग प्रदान करता है कोलैबोरेट से होकर के हमारे कंट्री से। जब ये कोलैबोरेट होते हैं, ये संस्थाएं जब जुड़ती है तो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करती। जब फोर्ड फाउंडेशन आपको दिख रहा है, जब हम फोर्ड फाउंडेशन की बात करते हैं तो ये क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम कह सकते हैं कि ये एक परोपकारी संस्था है, परोपकार करती है ये संस्था। किस किस दिशा में? ये हमारे सोच में, शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए गति प्रदान करती है। हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी परोपकारी संस्था है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी एक परोपकारी संस्था है और यहाँ जब हम जुड़ते हैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए संस्था काम करती है, कंट्री से जुड़ती है, विकासशील देशों से जुड़ती है और फंडिंग प्रदान करती है। इसके अलावा जब हम और भी संस्थाओं की बात कर लें, जैसे लीड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, शायद वही बातें हैं, सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड इनोवेशन। यानी जितनी भी ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है हमारी, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, फोर्ड फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन सब संस्थाओं का जो पर्पस है एजुकेशन पे काम करना, सोशल डेवलपमेंट पे काम करना, हेल्थ पे काम करना, इन्वायरमेंट एंड इनोवेशन पे कार्य करना और इसी चीजों पे ये फंडिंग देती है। इन सब के अलावा इंडोर चेयर है। रिसर्च चेयर इज ए prestigious academic position created to promote research in a specific subject area. These chairs are funded by government, universities or private donors. In India, research chairs are supported by institutions such as, अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो इंडोरेड चेयर्स है, यानी कौन कौन सी संस्थाएं भारत में काम कर रही है और किन किन संस्थाओं के द्वारा हम फंडिंग प्राप्त करेंगे। तो हम अगर भारत की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। साथ ही इन सब के अलावा ICHR है जो कि हिस्टोरिकल है और हमें उनके द्वारा भी फंडिंग मिलता है। ठीक है, अब अगर हम देखें, देखिए, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिसर्चर्स एंड टीचर, जो हमारे शोधार्थी हैं और शिक्षक हैं, कंडक्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, किन किन संस्थाओं से प्रोजेक्ट ले सकते हैं? मेजर गवर्नमेंट एजेंसियां जो है, मैंने कुछ कुछ का नाम यहाँ पे लिखा है, जिन एजेंसियों से हमारे आर्ट्स, साइंस वाले या मल्टी डिसिप्लिनरी कोई भी रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट नाम हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DSTR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। अब मैं चर्चा करूंगी कि ये जो संस्थाएं हैं किस तरह का रिसर्च ग्रांट कर रही है। तो सेम ही है, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, ट्रैवल ग्रांट्स करती है अगर हम फॉरेन जाते हैं,
हमारा पेपर सेलेक्ट होता है, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, तो निश्चित रूप से ये संस्थाएं हमारे जाने आने का ट्रैवल को जो है वो ग्रांट करती है और पूरे के पूरे पैसे हमें मिलते हैं। तो इन संस्थाओं से हमें ये सब भी लाभ लेना है। जहां हमारा एकेडमिक इम्प्रूव होता है वहीं हमारा नैक एक्रेडिटेशन कॉलेज भी लाभान्वित हो रहा है। जहां हम लाभान्वित वहीं कॉलेज लाभान्वित। तो हमें अपने आप को इसी अनुरूप ढालना है। तो चलिए और डिस्कस करते हैं। मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, ट्रैवल ग्रांट्स, रिसर्च फेलोशिप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस ग्रांट। हम नेशनल सेमिनार कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप है, एफडीपी है, एफआईपी है, हम इंटर्नशिप करा सकते हैं। इन सभी चीजों के लिए हमारी ये संस्थाएं हमें फंडिंग देती। प्रभाकर जी आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं बैठे नहीं, आगे नहीं जा रहा है। हाँ, now I would like to discuss the government and non-government organization that provide funding for research and academic activity. अब गवर्नमेंट एजेंसी क्या है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी क्या है? अभी तो हमने बहुत सारी एजेंसियों की चर्चा की, लेकिन सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां क्या है तो इसके बारे में भी हम समझते हैं। अगर गवर्नमेंट एजेंसी की बात करते हैं तो यूजीसी, ICSSR, ICPR एंड DST। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हमारा 4 फाउंडेशंस है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि परोपकारी संस्था है, जो कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पॉवर्टी पे वर्क करता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस, टाटा ट्रस्ट, ये सब हमारी नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं, लेकिन ये हमें शोध के लिए प्रमोट करती हैं और फंडिंग उपलब्ध कराती है। These projects focus on solving social, educational, economical and technological issues. अब हमें समझना है इंक्यूबेशन सेंटर ये क्या सेंटर होता है, इसको भी हमें समझना। इनका भी बहुत मेन रोल है हमारे नैक एक्रेडिटेशन। तो जब हम बात करेंगे इंक्यूबेशन सेंटर की बात करते हैं तो ये वो जगह है जो छात्रों को, शोधकर्ताओं को और युवाओं को, जो हमारे नए यंग हैं और युवा हैं, जब वो कोई अपना स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, अपने न्यू आइडियाज लाना चाहते हैं, तो इन न्यू आइडियाज के लिए या व्यवसाय खोलने के लिए, स्टार्टअप लाने के लिए ये संस्थाएं जो है, इंक्यूबेशन सेंटर जो है मदद करती है। और ये संस्था उसी के लिए बनी है। आप स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, आप न्यू आइडियाज लेके आइए और नया बिजनेस चाहते हैं तो आप कार्य कीजिए। तो गाइडिंग करना, हम कह सकते हैं मेंटर्स करना, फंडिंग देना और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम खड़ा करना चाहते हैं, हम स्टार्टअप्स करना चाहें, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी है तो हमें फंडिंग चाहिए, तो ये संस्था हमारी मदद करती है। तो इसी संबंध में मैंने इसको बताने की कोशिश की है। एन इंक्यूबेशन सेंटर इज ए फैसिलिटी एस्टैब्लिश्ड इन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट innovation, entrepreneurship, and startup development. These centers provide technical guidance, financial support, mentorship infrastructures for startups in India. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। Incubation centers are supported by organization like Atal Innovation. देखिए, a mission department of science and technology. Now, I would like to discuss a word
for research and innovations for teachers. These awards encourage teachers to conduct quality research and promote innovative ideas in higher education. Such achievements are also considered in the assessment of the NAAC. ये बात करने जा रही हूँ हमारे टीचर्स के लिए अवार्ड्स के, किस तरह का वो अवार्ड्स ले जिससे कि हमारी योग्यता तो डेवलप होगी, साथ ही हम नैक एक्रेडिटेशन में चले। तो अवार्ड फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अवार्ड्स हमें कैसे मिलते हैं? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च एंड एकेडमिक एक्सीलेंस। जब हमारा आउटस्टैंडिंग वर्क होता है, रिसर्च होता है, एक्सीलेंस होता है, तभी जाकर कोई भी हमें अवार्ड मिलता है। तो अवार्डों की जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने रखा है, शांति स्वरूप भटनागर, पद्म अवार्ड, नेशनल इनोवेशन अवार्ड। इन सब अवार्डों के पीछे अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, उसकी महत्ता देखें, तो हम कह सकते हैं ये एकेडमिक एक्सीलेंस प्रमोशंस है, इनोवेशंस है इन एजुकेशन की। अब अगर नैक के लिए कौन कौन से अवार्ड महत्वपूर्ण हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो ये हमारे टीचर्स के लिए भी है, ये हमारे रिसर्चर्स के लिए भी है, बोथ। तो कुछ अवार्ड्स की मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। सारे अवार्ड का तो सारे अवार्ड का तो डिस्कशन करना संभव नहीं है, बट शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, एक मिनट आगे बढ़ गया, छोड़िए। तो मैं 7 नंबर पे आ गई। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। भारत का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शोध पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए दिया जाता है। इसके बाद पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान जो शिक्षा, साहित्य और शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलता है, जिससे हम सीधे सीधे नैक में जाए। मैं बता दूं कि आजकल अवार्ड लेना बहुत जगहों से मिलता है, बहुत ऐसी संस्थाएं भी हैं कि आपसे कुछ पैसे ले लेंगी, 5,000 10,000, और उसके बदले आपको बहुत सारे अवार्ड दे देगी, बट वो अवार्ड हमारे नैक में काउंट नहीं होता है। तो आप देखिए, नेशनल इनोवेशन अवार्ड, अगर हम कुछ नवाचार करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, तो नई खोजों के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। बेस्ट टीचर अवार्ड उत्कृष्ट शिक्षण और शोध कार्य के लिए दिया जाता है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड है जो युवा शोधकर्ताओं को उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। मैं बात करूं यंग साइंटिस्ट अवार्ड की, तो यह पुरस्कार, आवाज आ रही है कहीं से, प्लीज म्यूट कर दे, काइंडली म्यूट कर दे। तो ये इंडियन नेशनल साइंटिस्ट एकेडमी द्वारा दिया जाता है। यूजीसी रिसर्च अवार्ड उच्च गुणवत्ता वाले शोध के लिए दिया जाता है। ICSSR बेस्ट अवार्ड सामाजिक विज्ञान के शोध में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ICPR अवार्ड दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में श्रेष्ठ शोध के लिए दिया जाता है। अब हमें जानना है कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ नैक एक्रेडिटेशन। इन अवार्डों का नैक में क्या महत्व है? तो ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज excellence in research and teaching. They improve the academic reputations of the institutions. हमारे institutions के reputation को बढ़ाते हैं। They help in NAAC accreditation and ranking. हमारे रैंकिंग में भी हमें उच्च स्तर का ऊपर उठाते हैं कि हम इंडिया लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा रैंकिंग रखते हैं। प्रभाकर जी नहीं हो गया,
Now I would like to discuss the number of PhD degree awarded, which is also important parameter in the evaluations for the National Assessment and Accreditation Council NAC. अब हमारे टीचर जो पीएचडी कराते हैं उसे भी पीएचडी अवार्ड के रूप में नैक एक्रेडिटेशंस में सीधा सीधा लाभ मिलता है। तो नंबर ऑफ पीएचडी अवार्ड पर टीचर्स, दिस इंडिकेटर शो द number of PhD degree awarded under the supervision of a teacher in a university or research institution. It reflects the research guidance, capacity, and academic contributions of faculty member. हमारे जो फैकल्टीज हैं उनके कंट्रीब्यूशंस को, उनके मेंटरशिप को दिखाते हैं। तो अगर इनके इम्पोर्टेंस को देखें तो शो द रिसर्च मेंटरिंग एबिलिटी ऑफ टीचर्स, टीचर्स के अंदर कितना मार्गदर्शन करने की क्षमता है, मेंटरिंग करने की एबिलिटी है, उसको वो दिखाते हैं। साथ ही दिखाते हैं कि कितने वो न्यू आइडियाज को लेके आते हैं और किस तरह से अप्लाई करते हैं। इंडिकेट क्वालिटी ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च, enhance the academic reputations of the institutions। कोई भी कार्य हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके रेपुटेशंस को बढ़ाता है। अगर हम एग्जांपल्स लें, if a professor supervise 10 PhD scholars and they successfully complete their PhD, then the PhD awarded per teacher equal to 10। अब देखिए कह सकते हैं हम लोग आज के समय में देखें तो ई कंटेंट का समय, ई कंटेंट रेफर्स टू डिजिटल लर्निंग मटेरियल क्रिएटेड बाय टीचर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। अब हमको समझना हो, अगर हम ई कंटेंट में नहीं बनाते, कार्य नहीं करते, तो हम अपने प्रमोशन में भी पीछे रहते, प्लस नैक एक्रेडिटेशन में सीधे सीधे पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमको इसका लाभ नहीं। तो हमें समझना होगा कि व्हाट इज ई कंटेंट, क्या क्या ई कंटेंट के अंतर्गत आ रहा है, हाउ वी विल इम्प्रूव ओन सेल्फ एंड आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर यूनिवर्सिटीज। तो देखिए ई कंटेंट रेफर्स टू द डिजिटल लर्निंग मटेरियल। अब मैंने सबसे पहले लिखा है वीडियो लेक्चर्स। हम अगर अपने लेक्चर को वीडियो में बनाते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, हम एक हमने यूट्यूब बनाया, मैंने भी बना रखा है, अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी अपने यूट्यूब चैनल को दिखाती। ढेरों मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियो बना रखे हैं, हम उसे प्ले लिस्ट कर लें। मान लीजिए मैं फिलॉसफी की टीचर्स हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो अगर मैंने इंडियन फिलॉसफी में अपना वीडियो बनाया है तो एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाए जिसमें इंडियन फिलॉसफी के हमारे सारे वीडियोस दिखने लगे। अगर मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी में वीडियो बनाया है तो ऐसा प्लेलिस्ट बनाए कि वेस्टर्न फिलॉसफी में दिखने लगे। तो हमें ई कंटेंट बनाना है, समझना है और उसको हाउ टू शो विद द ई कंटेंट, इसको समझ के हमको शो करना है। तो वीडियो लेक्चर एक हो गया। फिर ऑनलाइन स्टडी मॉडल्स, अब कुछ हम अपने नोट्स बनाएं, पीडीएफ बनाएं, एलएमएस करें। एलएमएस का मतलब हो जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये हम अपने कॉलेज में इम्प्रूव करें, वेबसाइट पे डालें और अपने जो नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, उसको बिल्कुल हम अपने वेबसाइट पे शो करें अपने नाम के साथ। सीधा सीधा नैक एक्रेडिटेशन में जा रहा है और सीधे नैक को पॉइंट मिल रहा है। मैं सारे फैकल्टी से यह कहना चाहूंगी कि आप वीडियो बनाएं और अपने प्रिंसिपल से अनुरोध करें कि आपके वीडियोज को वेबसाइट पे अपलोड किया जाए ताकि आपके कॉलेज के बच्चे, साथ ही अदर स्टूडेंट भी हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी विभाग से हो, आपके वीडियो को सीधे सीधे देख सके।
आपको पहचान मिलती है, साथ के आपके कॉलेज को पहचान मिलती है, साथ ही हम नैक एक्रेडिटेशन में जाते, हम बुक लिखते हैं। अब प्रश्न है हमारा बुक आज के संदर्भ में कैसा है। अब हम सिर्फ बुक पब्लिश करा दिए इससे काम नहीं होगा, जब तक कि हमारा डिजिटल बुक्स नहीं आ रहा है। तो हमें बुक्स को डिजिटल बनाना, वेबसाइट पे शो होना है, चाहे हम अमेजोन पे शो करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हम शो करें। जब नैक आती है, उसकी टीम आती है, नैक कमेटी के आने से ही पहले डाटा फुलफिल हो जाता है, वो सारे डाटा को चेक कर लेती है आपके यहाँ आने से पहले, उसमें मार्किंग भी वो कर लेती है। सिर्फ ओनली वो सेटिस्फैक्शन के लिए कॉलेज में एंट्री करती है। मार्किंग आपका पहले ही हो गया। अब कैसे मार्किंग हो गया? अगर आपका डिजिटल शो है, वो ज्यादा से ज्यादा जो डिजिटल दिखेगा, वेबसाइट पे दिखेगा, वो लिंक को ही डिमांडेबल मानती है कि आपका बुक है तो उसका लिंक है, आपने पेपर पब्लिकेशन कराया उसका लिंक है, तो लिंक ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमने अभी तक डिजिटल बुक्स नहीं बनाया है तो हम अब डिजिटल बुक्स को ही प्रमोट करेंगे। जो पीछे हम कर चुके हैं तो कर चुके हैं, हम अब आगे ही बढ़ेंगे और सारा कार्य हमारा ई कंटेंट को, डिजिटल को देखकर ही होगा। हम ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं, असाइनमेंट जो बच्चों से हम लेते हैं वो हम ऑनलाइन ले। हमारे यहाँ मूव प्लेटफॉर्म्स है, स्वयं संस्थाएं हैं, हमने तो बच्चों को एनरोल करा दिया है और बच्चे कार्य भी कर रहे हैं। सारे फैकल्टीज से अनुरोध है कि वो भी स्वयं से जुड़ जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन है, पूरी तरह से डिजिटल है। आप अपने भी कोर्सेस लाइए और स्वयं पे अपलोड कीजिए और नए नए कोर्सेस लाइए, अपने लेक्चर से अपलोड कीजिए, ताकि सीधे सीधे आपको तो एक परिचय मिले ही और साथ ही आपके आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म मिले, साथ ही हम नैक को भी एक्रेडिटेशन में जाए। इन सब के अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस करता है लर्निंग एंड दीक्षा। इंपॉर्टेंस अगर हम प्रमोट देखें तो डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग। क्या है मतलब? हम अपने लर्निंग को फ्लेक्सिबल बना रहे। वो गुरु शिष्य परंपरा जो कभी एक वृक्ष के नीचे हुआ करता था, आज हम और डेस्क का और चेयर पे पा रहे हैं। उन संस्थाओं से भी अब हम ऊपर उठ जा रहे हैं और डिजिटल जमाने में है। हमारा एजुकेशन ब्लेंडेड हो, हाइब्रिड हो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हो। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो हम बच्चों के पास पहुंचेंगे, हम लिंक शेयर कर दे, जो बच्चे ना आ पाए क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ वो बच्चे सीधा सीधा उस लिंक से जुड़ जाए। मैं कभी कभी अपने लिंक को शेयर करती हूँ और बच्चों से जुड़ती हूँ हाइब्रिड मोड पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज का डिमांड है क्लास टीचिंग का, इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। तो हमें इन तीनों में कूद जाना है, क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनाना है और इंटरेक्टिव भी बनाना है और एक्सपीरियंशियल भी बनाना है। अगर कुछ कमियां हम में है तो हम उसे दूर करें, लेकिन हम पहले समझे तो हमारे क्लास आज का क्या डिमांड करता है, तो हमें उस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। अब मैं बात करूंगी, नाउ आई विल डिस्कस द bibliometric, sorry, now I will discuss the bibliometric citation index in Scopus, Web of Science और PubMed। देखिए, हम लोग सब कोई पेपर्स लिखते हैं, पब्लिकेशन भी कराते हैं, नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, लेकिन पब्लिकेशन का क्वालिटी क्या होना चाहिए कभी हम इस बारे में सोचते ही नहीं है। पब्लिकेशन हो गया, बहुत जगह में इम्पैक्ट फैक्टर मिल गई, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, हम खुश हो जाते हैं, चलो इम्पैक्ट फैक्टर तो मिल गया। नहीं, ये हमारी खुशी का लेवल नहीं होना चाहिए। तो क्या लेवल हम आज के समय में ले जो हमारे हैप्पीनेस का कारण बने? तो देखिए, बिब्लियोमेट्रिक साइटेशन इंडेक्स इन स्कोपस। ये बिब्लियोमेट्रिक साइटेशन क्या है? आपने पेपर लिखा, ये सब जो है इंटरनेशनल जर्नल्स में होता है,
हमने इंटरनेशनल जर्नल में अपना पेपर पब्लिकेशन करा दी। अच्छी अगर आपकी जर्नल में पब्लिश हुई, और अब अगर आप मैं कह दूं ऑर्किड में इनरोल हैं, या आप एच इंडेक्स में इनरोल हो जाते हैं, या ग्लोबल इंडेक्स है उसमें आप इनरोल हो जाइए, आपके पेपर को कितने लोगों ने पढ़ा। जैसे एकेडमिया में मैं हूँ इनरोल, तो मुझे हर दिन मेल पे दिखता है कि मेरा पेपर किन किन लोगों ने देखा। मुझे पता चलते रहता है मेल पर, आज इस व्यक्ति ने मेरे पेपर को देखा, आज इस व्यक्ति ने मेरे पेपर को देखा। खुद मैंने वो पेपर कौन से इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कराया मेरे दिमाग से हट चुका है। मैं आपको बता दूं, मजेदार बात तो ये है कि बहुत पहले वो पेपर इंटरनेशनल जर्नल में दिया, वो पब्लिश हो, लेकिन उसका जो व्यू है वो मुझे दिखता है, लेकिन बट वो भी पूरी तरह से साइटेशन नहीं। हमको कब सेटिस्फाइड होना है, अपने आप को उस लेवल में ले जाना है जब हमारे मैटर को कोई कोड करे, रेफरेंस करे। डॉक्टर भारती ने के कोट करे कि उनके संदर्भ से मैं ये लेता हूँ, मैं उनके बुक से लेता, मेरे बुक से मेरी बहुत सारी स्टूडेंट लेती है, ये मुझे पता है। लेकिन हम अपने रिसर्च, इतने सारे रिसर्च को पब्लिश कराते हैं, मगर हम नहीं जान पाते कि हमारे पेपर को किसने किसने कोट किया। जो हमारे परिचित हैं वो बताते हैं कि अच्छा पोस्ट रिसर्च फेलोशिप कर रहे हैं तो मैडम हम आपकी बुक की मदद ले रहे हैं, तो मुझे पता चला। लेकिन इतने बड़े हमने इंटरनेशनल पब्लिकेशन कराया, लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा साइटेशन भी होना चाहिए, लोगों का कोट भी होना चाहिए। तो जब हम एच इंडेक्स में जाते और हम ग्लोबल इंडेक्स में जाए या ऑर्किड में अपना खोले, जैसे मेरा खुला हुआ है, प्लेटफॉर्म से जुड़े, तो सीधा सीधा हम एच इंडेक्स में अपना देखेंगे। अगर मान लीजिए 10 लोगों ने मेरे पेपर को कोड किया, तो एच इंडेक्स में मुझे 10 दिखने लगेगा, मतलब 10 लोग मेरे पेपर को कोड कर चुके। अगर कोड करेंगे तो निश्चित है ये आपका बेस्ट पब्लिकेशन। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बेस्ट से बेस्ट हो, लेकिन कब होंगे, जब हम बेस्ट का पैमाना जाने कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका मापदंड क्या है। अगर हम मापदंड ही नहीं जानेंगे, छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाएंगे कि चलो हमें तो इम्पैक्ट फैक्टर मिल गया, 7 मिला, 8 मिला, 9 मिला, इसी से खुश हो जाएंगे, तो क्या हम उस स्टैंडर्ड को छू पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने डाला है कि हमारा पेपर तो पब्लिश हो, लेकिन साइटेशंस हो। हमें समझना होगा और अपने आंखों से देखना होगा कि कहाँ कितने लोगों ने कोट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इंडेक्स में जाना। तो ये सब एक क्वालिटी है। दूसरी मैंने चर्चा की है, स्कोपस तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है, वहां में जाना है। साइंस के लिए वेब ऑफ साइंस है, वहां अगर हम पब्लिश कराते हैं तो ही हमारे पब्लिकेशन का महत्व है। तो हमें समझना है, देखना है और अपने आप को वहां तक पहुंचाना। अब मैंने चर्चा की है पबमेड, तो हमें समझना होगा कि ये पबमेड क्या है। व्हाट इज ए पबमेड? तो पबमेड इज ए फ्री ऑनलाइन, ये फ्री ऑनलाइन डाटाबेस है टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल रिसर्च। तो जब हम बात कर रहे हैं पबमेड की, तो हम समझे क्या है, यहाँ पे फ्री है, मतलब हमारा जो डाटा है, पब्लिकेशंस है, वो फ्री होगा, वो फ्री एक्सेस होगा, लेकिन वो मेडिकल में, मेडिसिन में होगा, वो लाइफ साइंस में हम देख सकते हैं, एंड बायोमेडिकल रिसर्च। तो ये सब जगह अगर हम शोध पत्र को प्रकाशित करते हैं तो ये हमारी गुणवत्ता को और प्रभाव को दर्शाता है और एक इंटरनेशनल स्तर पर पहचान बढ़ाता है। अभी नेक्स्ट है, एक मिनट, प्रभाकर, हाँ हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम जो मैंने पीपीटी बनाया है, बिब्लियोमेट्रिक पब्लिकेशन स्कोपस वेब ऑफ साइंस। तो इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है
कि जो डिप्लोमेटिक पब्लिकेशंस होता है रेफर्स टू रिसर्च पेपर पब्लिश इन इंटरनेशनल इंडेक्स जर्नल, लेकिन अंतर क्या है एच इंडेक्स में और जो बिब्लियोमेट्रिक हम साइटेशंस की बात कर रहे हैं उसमें? देखिए बहुत सारा साइटेशंस होते हैं, लेकिन कितने लोगों ने साइटेशंस किया, क्या हमारा नंबरिंग कितना आया, ये हम नहीं जान पाते। तो हम जानना चाहेंगे ना कि हमारा कोड कितने लोगों ने किया, तो हमको एच इंडेक्स में जाना होगा। जब हम एच इंडेक्स में एनरोल होंगे तो वहां हमको दिख जाएगा कि आज इतने लोगों ने हमारा रेफरेंस लिया, आज इतने लोगों ने रेफरेंस लिया। अभी हम छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश होती हूँ जब एकेडमिया में मुझे रोज मेल पे दिखता है कि ये लोगों ने पेपर दिखा, ये लोगों ने पेपर देखा, लेकिन नहीं, हमको इम्प्रूव करना है, हमको साइटेशन में जाना और अपना देखना है कि हमारे लोगों ने कितने लोगों ने रेफरेंस किया। वही मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, एग्जाम्पल दिया है कि इफ ए रिसर्चर हैज 10 papers and each has 10 citations, then the H index equal 10. 10 लोगों ने साइटेशंस किया तो हमारा साइटेशंस नहीं साथ ही रेफरेंस दिया तो वो 10 दिखेगा। तो इस तरह से हमें समझना है, ये एक सूचांक है, ये सब एक इंडेक्स है हमारे पब्लिकेशंस का। अब हम एक मिनट, नहीं रुकिए, अभी टाइम फ्रेंड में मेरे में हड़बड़ाई हुई, इनको बोलने दीजिए। अब हम बात करेंगे, ठीक है कोई देर भी होगी तो कोई बात नहीं। तो अब हम बात करेंगे कि एमओयू की, आगे पीपीटी थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, चलिए हम बात करते हैं एमओयू की। हम कैसा एमओयू करें कि जिससे हमारे नैक एक्रेडिटेशंस में सीधा सीधा हमें बेनिफिट मिले। तो एमओयू क्या होता है? ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट है। एमओयू जो होता है वो फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन, दो संस्थानों के बीच में हम एमओयू करते हैं फॉर कोलैबोरेशन इन रिसर्च, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। Financial MOUs involve funding, support for research project, academic exchange, or innovations program. Examples of partner organization may include university, industries, international institution, importance. हमारा जो MOU जो होता है वो क्या प्रमोट करता है? तो रिसर्च कोलैबोरेशंस, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, इनहैंस इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। तो जो एमओयू है वो इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, वो हमारे इंटरनेशनल बॉडी से हो सकता है, यूनिवर्सिटी से हो सकता है, और इस तरह से हम अपने कार्य को, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में हो, चाहे वो इनोवेशंस हो, चाहे एफडीपीज हो, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द research innovations and extensions। अब हमको समझना होगा कि एक्सटेंशन क्या है और नैक एक्रेडिटेशंस में एक्सटेंशन को क्या बेनिफिट मिलता है और हम किस तरह से सीधे सीधे पॉइंट पे जा रहे हैं। रिसर्च फैसिलिटीज के लिए मैंने पॉइंट लिखा है, बगल में जो नंबरिंग है वो पॉइंट है, सीड मनी है। अब अगर हम सीड मनी की बात कर लें तो या नंबर ऑफ JRF, SRF, पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट, उसका दिख रहा है जिसको हम लोग सब कोई जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, जूनियर लेक्चर। अगर हम सीड मनी की बात कर ले तो इज द इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टू टीचर टू स्टार्ट ए रिसर्च प्रोजेक्ट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप आइडिया। यानी जब हम सीड मनी की बात करते हैं तो ये हमारा एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो यूनिवर्सिटी देती है, हमारी संस्था देती है, हमारे शिक्षकों को देती है, स्टार्टअप्स के लिए देती है, इनोवेशंस के लिए देती है, प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि अगर हम बाहर से फंडिंग नहीं ले रहे हैं तो सीड मनी के जरिए अपनी संस्था से, अपने यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट फंडिंग ले सकते हैं। यही हमारा सीड मनी है। ठीक है, आई थिंक ऑल आर क्लियर। तो व्हाट इज द सीड मनी? हम क्लियर हो रहे हैं
कि हमारा सीड मनी क्या है। अब हम चर्चा करें डीएसटी, एफआईएसटी एंड डीबीटी। देखिए डीएसटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, और जो एफआईएसटी लिखा है वो फंडिंग अवेलेबल कराता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए, लैबोरेटरीज के लिए, और नए नए यंत्रों उद्योगों में जो जरूरत होती है या जो लैब में जरूरत होती है उसके लिए। डीबीटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारा डीबीटी। तो ये सब फंडिंग देता है और इनसे हमें फंडिंग लेती है। निश्चित हमारा साइंस डिपार्टमेंट इससे जुड़ेंगे और अपने आप को एनरोल करेंगे और यहाँ से फंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि वर्कशॉप और सेमिनार पे देखिए सीधा सीधा पॉइंट मिल रहा है। अगर हम वर्कशॉप कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं फैकल्टी को या स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए भी पॉइंट है। कोड ऑफ एथिक्स हमारा होना चाहिए, साथ ही इंसेंटिव टू टीचर होना चाहिए। अब हम लोग वर्कशॉप सेमिनार तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन सभी सेमिनार सभी वर्कशॉप उतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना कि हम किसी एजेंसी के थ्रू कराते हैं, फंडिंग लेते हैं, और उसका मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट्स होता है। अब मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात करती हूँ कि ज्यादातर लोग कोड ऑफ एथिक्स नहीं समझते हैं। व्हाट इज ए कोड ऑफ एथिक्स? सो नाउ वी डिस्कस द कोड ऑफ एथिक्स। A code of ethics is a set of rules, ठीक है, ये नियमों और नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है। क्या है कोड ऑफ एथिक्स? कोड ऑफ एथिक्स इज द सेट ऑफ रूल्स एंड मॉरल प्रिंसिपल that guide the behavior and professional conduct of teacher, researchers and a student in an educational institution। हमारे शैक्षिक संस्थानों में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा जो मतलब कि अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं या शिक्षक है, शोध करता है, तो उनके बिहेव को, उनके पेशेवर आचरण को नियंत्रित करता है। तो इसीलिए मैंने कोड ऑफ एथिक्स की चर्चा की है, और इसका उद्देश्य, पर्पस है शोध में ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखना। इसका उद्देश्य शिक्षा और शोध में ईमानदारी है, यानी हम आजकल कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर ले, कुछ भी शोध कर ले, तो वो सब नहीं चलने वाला है। ऐसे तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो हमारे शोध को सीधा सीधा चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई डिग्री अवॉर्डेड हो रही। फिर भी शैक्षिक संस्थानों में हमारा जो मॉरल है, एथिकल है, एक कंडक्ट है, उसका भी एक स्टैंडर्ड है और उसको हमको फॉलो करना ही होगा। तो चोरी से बचाने, निष्पक्ष मूल्यांकन और जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है, और उसके भी 5 पॉइंट हमें मिले। अब हम बात करूं इंसेंटिव्स टू टीचर्स, ये क्या है? शिक्षकों को प्रोत्साहन। इंसेंटिव टू टीचर का मतलब हो गया हम शिक्षक को किस तरह से प्रोत्साहित करें। हमें भी प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम भी प्रोत्साहन चाहते हैं। तो ये पुरस्कार या लाभ जो संस्थान शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षण, शोध और नवाचार के लिए प्रदान करता है। अगर हम इसके काइंड्स में देखें कि हमारे जो इंसेंटिव्स हैं उसके क्या क्या काइंड्स है, तो हम देख सकते हैं शोध अनुसंधान है, रिसर्च ग्रांट्स एंड फंडिंग, अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस, शोध पर प्रकाशित करने पर कह सकते हैं प्रमोशन एंड कैरियर एडवांस, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर पब्लिकेशंस, सपोर्ट फॉर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस। तो हमारे रिसर्च ग्रांट और फंडिंग हमने कितना लिया, हमने अवार्ड कितने लिए, हमारा रिकॉग्निशंस कितना हुआ, हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमारा कितना है, कितने सेमिनार, कितने कॉन्फ्रेंसेस, इन सब पर पॉइंट है। खास करके पेटेंट पे। पेटेंट क्या है? ए पेटेंट इज ए लीगल राइट granted by the government and inventor for a
न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम कुछ नवाचार करते हैं, नए कार्य करते हैं, तो उसके लिए पेटेंट की व्यवस्था है जो 20 सालों तक रिकॉग्नाइज रहती है। भाई ये हमारा कार्य है। तो हम कह सकते हैं पेटेंट सरकार द्वारा किया गया एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, पेटेंट क्या है? सरकार द्वारा किया गया एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति के नए आविष्कार या तकनीक को सुरक्षित रखता है। तो हम इसको भी देखें, ये भी हमारे नए क्राइटेरिया में आता है। क्या क्या है? पीएचडी अवार्ड पे हमें मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है नैक एक्रेडिटेशंस में। हम पेटेंट पे पॉइंट है। अगर आप इंटरप्रेन्योर ऑफ स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो उस पे भी पॉइंट। अब प्रश्न उठता है इंटरप्रेन्योर ऑफ स्किल डेवलपमेंट क्या है? सीधा से क्वेश्चन आ रहा है। तो इंटरप्रेन्योर ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग ए न्यू बिजनेस और स्टार्टअप बेस्ड ऑन इनोवेटिव आइडिया। जो हमारा इंटरप्रेन्योर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, किसी उद्योग के लिए, उद्यम के लिए हमारा जो कौशल विकास होना चाहिए वो हमारा वह प्रक्रिया है जो इसमें व्यक्ति नए व्यवसाय या स्टार्टअप को शुरू करता है, उसे विकसित करता है। यानी हम कोई नया कौशल कर रहे हैं, कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप करता है, तो हम किसी भी नए को जो इंटरप्रेन्योर लिखा है यानी कोई नया उद्यम करना चाहते हैं, अगर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से फंडिंग लेते हैं या अभी मैंने बताया इंक्यूबेशन सेंटर से मदद लेते हैं, तो भी हमें पॉइंट मिलने जाए। तो बस 5 मिनट और है। हाँ, तो फिर हमारे रिसर्च पेपर में है, अगर हम बुक चैप्टर कराते हैं एडिटेड वॉल्यूम में तो उसमें है हमारा ई कंटेंट डेवलपमेंट करते हैं। अभी मैंने ई कंटेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो हमें उस पर जोर देना है। तो उसमें भी हमारा पॉइंट है। मैंने अभी बिब्लियोमेट्रिक साइटेशन इंडेक्स बता दिया कि कैसे हमको साइटेशन होना है। छोटी छोटी खुशियों से बिल्कुल खुश नहीं होना है, बड़ी खुशियों की ओर ही दौड़ना है। तो हम बड़ी ही चीजों को सोचेंगे और उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो हमें कहाँ जाना है? साइटेशन में जाना। साइटेशन में तभी हम संतुष्ट हो गए जब हमें अपना दिखेगा। तो हमें कहाँ जाना है? एच इंडेक्स में जाना। हमें देखना है कि कितने लोगों ने हमें कोट किया। तो एच इंडेक्स से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। और अगर आप एच इंडेक्स में हैं तो आपके कॉलेज को, इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटी को नैक एक्रेडिटेशन में सीधा सीधा पॉइंट। आपके साथ साथ आपकी इंस्टीट्यूशन, आपकी यूनिवर्सिटी सीधे सीधे बेनिफिशियल में जाती है, लाभान्वित होती है। अब है जो हम देख रहे हैं कंसल्टेंसी पॉलिसी। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज ए कंसल्टेंसी पॉलिसी। तो यह वह नीति है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक या विशेषज्ञ उद्योगों, संस्थाओं या सरकारी संगठनों को पेशेवर सलाह देते हैं। मतलब हम यहाँ हैं लेकिन किसी इंडस्ट्री, मैं यहाँ हूँ, अगर टाटा इंडस्ट्री को सलाह दे दूँ, मैं यहाँ हूँ किसी संस्थान को सलाह दे दूँ, किसी यूनिवर्सिटी को सलाह दे दूँ, तो अगर इस तरह के हम संस्थानों को, संगठनों को, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है या इंक्यूबेशन सेंटर्स है, किसी को भी अगर हम सलाह देते हैं तो हम सीधे सीधे कंसल्टेंसी पॉलिसी में जाते हैं। तो हमें इस ओर भी ध्यान देना है। अब हम अपने मंजिल के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। प्रभाकर जी जरा ये ना, हाँ हो गया, ठीक है। अब हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज में जाते हैं जिसकी मैंने चर्चा की। इस एक्सटेंशन एक्टिविटीज में एनएसएस और एनसीसी आते हैं। ये जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज है ये क्या है कि जब हम राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कोई सामाजिक कल्याण करते हैं या कम्युनिटी कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज में जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अवार्ड्स ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज में किसी गांव को
विलेज को जब हम एडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए हमें नैक एक्रेडिटेशन में पॉइंट मिलता है। जब हम अवार्ड ऑफ आर एक्सटेंशन वर्क फॉर टीचिंग स्टूडेंट, तो जब हम किसी टीचर्स के लिए है, जब वो राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, विद्यार्थी इन्वॉल्व होते हैं और उस तरह के प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है और सीधा सीधा नैक एक्रेडिटेशन में हम जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखूं, एनएसएस एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम। तो ये क्या है? यह एक सरकारी कार्यक्रम है, गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो छात्रों को सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन एक्सटेंशन एक्टिविटीज। बच्चों को प्रमोट करना है QI और NSS NCC जैसे सामाजिक जो हमारे कार्य है उससे बच्चे भाग लें और प्रमोट लें। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज है, ये क्या है? अब कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज की जब हम बात करें तो ये एक ऐसी शैक्षणिक संस्थान या अन्य संगठन जैसे NGO हो गए हमारे, ठीक है, या हम किसी इंडस्ट्री से जुड़ गए जो उद्योग वाले हैं, या हम सरकारी संस्थाओं से जुड़ करके कोई भी सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं या शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करते हैं, तो वो हमारा कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज आता है और उसके अंतर्गत भी हमें पॉइंट। फिर वही MOU में हम आ गए और फंक्शनल आ गए। अब मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन से MOU कर, इंस्टीट्यूशन से कर ले, यूनिवर्सिटी से कर ले, किसी इंडस्ट्री से कर, हमने बहुत सारे MOU कर लिया, क्या हमें नैक पॉइंट दे देगी? बिल्कुल भी नहीं। नैक ये देखेगी कि आपने जो भी MOU किया है उसके साथ आपने कितना वर्क किया, आप उससे जुड़े हैं या नहीं, उस संस्था से जुड़कर आपका कितना कार्य हुआ है, उन सबको जज करती है हमारी नैक कमेटी। तभी जाके हम उस MOU से हमें जो है, कट गया क्या प्रभाकर जी? पता नहीं, उस MOU से हमें कोई पॉइंट मिलता नहीं। हाँ, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मैंने कोशिश की कि यार किस तरह से हम अपने आप को डेवलप करें और नैक एक्रेडिटेशन में जाए और खुद। थैंक यू and thank you principal sir for giving me the opportunity to faculty development program for my lecture. Thank you sir. अच्छा, ये कट हो गया, हो ही जाएगा, तुम्हें टाइम नहीं बचा, 4:30 क्या क्वेश्चन क्या हो अभी तक है समझ नहीं नहीं, आपका दिलवाएंगे ना। क्वेश्चन क्या? माइक इसको कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, बहुत बड़े 3-4 क्वेश्चन मोबाइल लेके चले गया समझ में हो गया, चल रहा है? नहीं आप चल रहा है, हमको लगा कट गया। कीजिए, क्वेश्चन दिखाना है। नहीं उठाया। ओके, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। किसी भी प्रेजेंटेशन की सक्सेस तभी होती है जब क्वेश्चन आए, तो यहाँ ऑनलाइन क्वेश्चन लोगों ने किया है। क्वेश्चन आप लोगों को सुनिए, हाउ कैन एन इंस्टीट्यूशन डेवलप ए स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क थ्रू which faculty members can apply and conduct research or extension project within the college। कहने का मतलब है कि हम कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह से डेवलप हो सकती है या फ्रेमवर्क की तरह से कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। जी SKU लिखा हुआ है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको सर्टिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि चाहे आप अपने आप को कोई भी प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, तो अभी मैंने बात किया गवर्नमेंट एजेंसी, ये मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था ये, अच्छा ठीक है, अभी मैं बात कर रही थी गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन, रहने दीजिए मैडम, फिर आगे बात यही रही। अभी मैं बात कर रही थी गवर्नमेंट एजेंसी एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी की।
आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में हैं, आप अगर आप मान लीजिए आर्ट्स स्ट्रीम में हैं तो आप ICPR में अप्लाई कीजिए, आप ICSSR में अप्लाई कीजिए, आप ICHR में अप्लाई कीजिए। कुछ हिस्टोरिकल है, कुछ फिलोसफिकल है, कुछ सोशल साइंस है। इन सब चीज़ों का जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमेशा ही आते रहता है। आप एडवर्टाइजमेंट देखें या आप सीधे सीधे वेबसाइट पे चले जाएं, ICPR की वेबसाइट है, आप प्रोजेक्ट को में क्लिक करिएगा, आप जाइए ICPR की वेबसाइट पे या ICSSR की वेबसाइट पे, वहाँ प्रोजेक्ट बना हुआ है, आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, पूरा आपको डाटा खुल जाएगा और आप वहाँ से अप्लाई करेंगे, गाइडलाइंस देखेंगे, उसकी गाइडलाइन क्या क्या है, उस गाइडलाइन को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, फिर एक जो भी आपके मन में हो एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए कि क्या कौन सा प्रपोजल तैयार कीजिए कि किस प्रपोजल पे आपको कार्य करना है और वो प्रपोजल आप सबमिट कीजिए। निश्चित रूप से आपको उस प्रपोजल में, अगर वहां पे हमारे एक्सपर्ट बैठते हैं, हमेशा मीटिंग होती है और मीटिंग में अगर आपका प्रपोजल सेलेक्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से आपको प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो, आपने जिस भी चीज के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो FDP हो, वर्कशॉप हो, आपने जो भी अप्लाई किया है, वहां एक्सपर्ट अगर पास कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। तो आपको इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। आप गवर्नमेंट से अगर ले पाते हैं फंड तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉन गवर्नमेंट एजेंसी भी है। और अगर मान लीजिए आप कोई किसी इंडस्ट्री से लेना चाहें, आपका बिजनेस में ध्यान हो, तो आप इंडस्ट्री से भी, उनकी भी, सबकी एडवर्टाइजमेंट, आगे कोई नहीं, सबकी एडवर्टाइजमेंट आते रहती है। प्लीज प्लीज। अच्छा, समय की कमी होने के कारण सॉरी, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, मैं आपके और क्वेश्चन को नहीं ले पा रही हूँ। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम डिटेल पे मेरे क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और मैं आपको जवाब दे दूंगी। अच्छा, मेल डाल दिया गया, उस पर मैं आपको जवाब दे दूंगी। तो आप, मुझे लगता है कि आप मेरे जवाब से सर्टिफाई होंगे और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे फोन में भी बात कर सकते हैं। मैं जहां तक जानती हूँ आपकी मदद बिल्कुल ही करूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am, for elaborative session. And we will give you, our dear participants, we will give you Dr. Bharti, ma'am, email ID. So please contact to her for another question or another things. I would like to invite now session in the 8. So I would like to invite Dr. Miss Shashikala, ma'am, to give a vote of thanks for this session. Please come, ma'am. Good evening, everyone. It is my proud privilege to propose the vote of thanks for today's FDP session on research, innovation, and extension. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to Dr. Bharti ma'am for delivering such an insightful and inspiring session. Your valuable thought truly motivated us to explore contribution. I would like to extend her for their constant encouraging academic programs that helps us grow professionally. I would also like to extend our thanks our senior resource person, Professor Dr. D.P. Singh sir, for showing interest in listening to the lecture is delivered by Dr. Bharti ma'am. It shows his keen interest in research and knowledge. Thank you, sir, once again for sparing your valuable time with us. My gratitude also goes to all the organizing committee members in the presence of Dr. Sweta Bala ma'am and Dr. Sweta Rai ma'am and a staff who works behind the scene to make this FDP session successfully. I would also like to thank all the participants and faculty members who actively attend online and offline mode and contributed their making this program interactive and productive.